Uh, Good evening. Mm, Good evening.
Hello. 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 Good evening, Jyoti sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Wait. I need to comment. Oh, oh, okay. Am I audible now to Yeah, all? Am I audible to all? yeah, audible, perfectly. Yes, sir. Yes, yeah. So, so share now. Where to share? So, is it visible to all my PPT? Yeah, visible. So, yesterday, as I told you, so we need to discuss some of the things that we have discussed earlier, right? Right. So, have you gone through this basic about that I told you? Have you searched some basic things about what is polymer and all? One request, sir. Are we getting this PPT which you are presenting? Yes, you are getting in. When? Maybe just because if you get now, we can go through that quickly. Okay. So today after the class, I will share the PPT, whatever I studied you. That will be good because yesterday I was busy in office meeting. Anyhow, Yeah, I requested the recorded session for yesterday. Yeah, yeah. thank you. Yeah, tomorrow, yesterday, what we have discussed is about addition and condensation polymerization, right? Different polymer for addition polymerization and different polymer for condensation polymerization, right? So, to give you a brief about yesterday's session, so we have studied that the polymer that is double bond in it, like two bonds that can go through addition polymerization, right? Similarly, the polymer which have functional group in it, then that can go through condensation polymerization, right? So this is the basic thing that we have discussed yesterday. And we have also discussed about the different types of homopolymer, copolymers, right? Am I correct? Correct, correct. Yeah. So we have discussed about what is the random copolymer, what is the alternative copolymer, what is block copolymer, how to identify them. So have you seen search any kind of grade, homopolymer grade of reliance and copolymer grade of reliance? That you can search, na? That is not in my slide also. Have you searched and see what are the properties of homopolymers and copolymers in that grade? No, you have not seen that. Search that because it is already available on the web. So if you go to the Google and then search it, what is the homopolymer of Reliance and what is the copolymer of Reliance, then you can easily find out in Google. So what are the homopolymers grade for your better understanding and what are the copolymers grade, right? So we have discussed about linear branched and network structure, right? We have discussed about this, right? Yes, sir. We have discussed about linear structure, branch structure, and network structure, right? So in that structure, I have told you earlier that HDP is the most linear polymer. Then when you go for branched polymer, then you that is LDP is the branch polymer. And network polymer, I told you about that thermoset networks, how it forms, right? What is the difference between thermoplastic and thermoset? I told you, no? Yeah, Yes, sir. Yeah, yeah. So uh, I also have I told you about this picture? What is the LDP, HDP? That is LD. You can easily see that HDP is just very less branch and most linear polymer, right? Whereas LDP is completely branched, high number of branching, and LLDP is branching but small number of branching, right? That I have told you now. I have already discussed about this, right or no? yeah. We discuss, yeah. I have discussed about the Yeah, HDP is the most right. linear polymer, and sorry.
Right. Please go ahead. So HDP is the most linear polymer. Then I told you that LDP is the polymer where the more branching are there, right? Also LLDP, that is a copolymer of HDP and octene rubber, octene elastomer, right? That I have told you, right? But if you differentiate between two major polyethylene, that is high density polyethylene and low density polyethylene. These are two major type of polyethylenes that we use. So high density polyethylene is mostly linear polyethylenes, whereas low density polyethylene is branched polyethylene, right? Right. Right. Yes. So for low density polyethylene, what are the applications? I told you that plastic bags, carry bags, right? We are taking carry bags from a grocery shop, right? So they're made of only low density polyethylenes. That's why we usually what you said, that it's a polyethylene bags, right? Whereas HDP is mostly milk, jug, bottles, jars, right? 5 liter jar, that big ghee ka dabba that we used, and containers that is mostly used in blow molding machine, right? That is known as high density polyethylenes, So you are telling right? one doubt means for blow molding, HDP is more suitable, right? You mean to Yes, yeah. For blow molding, HDP is mostly used. due to its flexible No, property. no, yeah. Why it is mostly used? Because of its first of all, HDP has a very less MFI. Now they are developing some grade of high density polyethylene, which has been cracked by some of the chemical processes where you can increase the MFI. But if you see, because of its linear structure and the more number average molecular weight, the molecular weight of the HDP is quite high. Because of that also, what happens? Its flowability, as the molecular weight increases, the MFI value, you know what is MFI, melt flow index, right? Do you know what is MFI? What is melt flow index? Or should I explain to you what is Maybe MFI? you can explain. It Sir, is, We please know, but explain, for sir. interest of all, you can explain. Will be good. yeah. So, what is MFI? In industrial practice, it is the very basic machine to measure the flow behavior of any polymer, right? So how can you measure the flow behavior of any polymer? Where there, what you do, where you are there, you are going to measure the flow properties, that is melt flow index, by using some of the standard load. For polyethylene, it is always 190 degree, 2.16 kg or 5 kg standard load. For polyethylene, it is 230 degree and 2.16 kg standard load, right? Depending upon the grade. So depending upon the polyethylene and polypropylene, the standard has defined that for polyethylene you require a 190 degree Celsius temperature and 2.16 kg load. For polypropylene you require a 230 degree Celsius temperature and 2.16 kg load. But some of the case in HDP, people will do 190 degree Celsius temperature, but they're going to increase the load to 2.16 kg to 5 kg. Whether by increasing the load, they want to see whether the flowability is higher or lesser. That for that purpose they are increasing, because polyethylene, high density polyethylene has very less MFI, like 0.5, 0.6, 0.8, 1.2, like in that range. Nowadays what happens? The high density polyethylene grades has been chemically cracked. That means some of chemical additives have been put while extruding HDP polymer. So for that, what happens? The chain has been break so that the MFI value increases. That's why you will getting a high MFI HDP also available in the market. But previously, HDP is known for its low MFI. So that's why it is very versatilely used in blow molding machine. But because why? Low MFI material has a better, higher viscosity. So in blow molding, what you did, you are making an parison, right? Right, Right. right. You are making an parison, then you are blowing it up. So for that parison, if you reduce the viscosity, then it will sag. So parison आपका नीचे गिर जाएगा because of its low viscosity. But as the polyethylene is a high density polyethylene is a low MFI material. For that purpose, it is more suitable for blow molding application.
So Low previously HDP, MFI means high viscosity, right? yes, low MFI means high viscosity, right? Okay. Also, If, high if, MFI if means I low compare viscosity. related to PP and HDP means which were Look, having low MFI? now PP has certain grade has been developed, that is copolymer or PP that I told you, na, random copolymers Okay, and okay. all. That also have a low MFI. But if you see the main origin of PP, right, and main origin of HDP, I'm considering the basic, matlab the main backbone of PP. If you take only propylene units and make a polypropylene, if you take only ethylene unit and make a polyethylene, that is high density polyethylene. No linear, no branching is there, only linear chain. Then HDP should have a low MFI because of its high degree of polymerization. So molecular weight is quite high. When molecular weight is quite high, so you will get a, sorry, Yeah, when please continue. molecular, Yeah. sorry, Please continue. yeah, when molecular weight is quite high, so you will get a high viscous polymer, right, while melting it. So when you get a high viscous polymer, it is more suitable for blow molding application. Why Got I'm it. saying that, you must be seeing the फॉर्मेशन ऑफ पैरिजन. पैरिजन जब आपका बनता है तो पैरिजन आपने देखा रहेगा कि कितना विस्कोस होके ऐसे नीचे ये होके रहता है, राइट. Right, अगर right, उसमें विस्कोसिटी आपका लो हो जाएगा तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, right, right, right. राइट. फॉर And दैट पर्पज यू, yeah, सॉरी, yeah. Only for blow molding, only hmm. HDP is suitable for high No, it strength. is previously HDP is most widely used for blow molding. Now, If some of the grade of polyethylene, that is random copolymer of polyethylene has polypropylene has been come. That random grade that has low MFI, right? So right, that right. also people are using. But Okay. मोस्टली अगर कोई पहले एचडीपी की बात करता था ना, तो मोस्टली पहले एचडीपी लो एमएफआई का ही आता था. नाउ द प्रोसेस हैज बीन डेवलप्ड, केमिस्ट्री हैज बीन डेवलप्ड. लोग उसको अलग अलग तरीके से क्रैक कर लेते हैं, उसका चेन ब्रेक करके उसका एमएफआई बढ़ा देते हैं एचडीपी का. तो उसके लिए Okay, कुछ okay. कुछ ग्रेड ऑफ एचडीपी आजकल इंजेक्शन मोल्डिंग में भी यूज होना चालू हुआ है. नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में पहले एचडीपी ब्लो मोल्डिंग में ही यूज होता था. और मोस्टली पहले जो ओनली पीपी था, तो PP only PP has a higher MFI depending upon its molecule, depending upon its molecular weight. बट अभी क्या हुआ, PP के साथ ऑक्टिन ब्यूटिन ऐसे ब्रांचिंग करके पॉलीमराइज करते हैं ना, तो उसका विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है. तो वो अभी लो विस्कोस, सॉरी, उस हाई विस्कोस PP भी आने लगा जिसका MFI बहुत लो है. वो भी आजकल HD इसमें ब्लो मोल्डिंग में थोड़ा थोड़ा यूज होना चालू हुआ है. Great, बट great. बट HDP इज द बेस्ट मेटेरियल टू यूज इन ब्लो मोल्डिंग मशीन. वो ब्लो मोल्डिंग के लिए ही बेस्ट मटेरियल. जैसे आपका, Blow molding both injection blow molding or extrusion blow molding both. no. For injection, so for extrusion blow molding, I am taking. For injection blow molding, it is always polyethylene terephthalate. That is the best material. Okay. एक्सट्रूशन ब्लो आपने देखा रहेगा, पहले प्रीफॉर्म बनता है, इस केस में पैरिजन बनता है, देन Actually, आपका इंजेक्शन केस में. physically we have not seen. We request if any physical industry visit is there, let us know. So Yeah, those that who are IPA interested, they people can they can visit it. arrange. Yeah, they can arrange it because Yeah. I am in. So that is mostly in the industry. They have Because very large machines. if you read now, if you Yeah, meet physically, I can. If I have time today, so I can search in web and show you some of the images. yeah, That will be fine, right? please, yeah. Uh, Sir, one question. How this yeah. branching, creates a difference in the properties of SDP and LDP? Oh, right. So previous class you are there, right? Sorry, I missed yesterday class. So, So okay. So you missed yesterday class. The previous class I told you HDP is the most linear polymer in the whole polymer family because it is only made of carbon and hydrogen. It is the most linear polymer in that whole polymer family. It is the most. It is considered to be the most linear polymer, right? So if you have you shown the structure of ethylenes, you know what is ethylenes. You are in the what background? Science, arts, commerce. mechanical industry, So you are major. mechanical engineer. Especially you have also studied chemistry, right? In your Yeah, bachelor, yeah, yeah, right? So you can easily see here. This is the. Have you seen this CH2 double one CH2? yeah. You're seeing it, right? This is known as ethylene units. What? Ethylene Ethylene. units. Yeah. So Yeah. when this ethylene will polymerize, it will make polyethylenes.
right? Yeah. So this monomer will polymerize thousands time, lakhs time to make a polyethylene, right? When Right. ethylene is polymerized, so it will make a polyethylene. So if it is a linear polyethylene, that is known as high density polyethylene, right? If it is a branch polyethylene, that has been some of the low pressure process they are making it, then it is known as low density polyethylene. Got it? Got it. So for low density polyethylene, your every property is going to reduce. Your density is going to reduce, as I mentioned earlier, right? Your density for high density polyethylene is high, whereas for low density polyethylene it is very less. You can see it here from here, this value. You're seeing this value, no? Yeah. So compared to HDP, LDP density is very less. But in between that what they have done, they have HDP which has been mixed with octene rubber and polymerized. That segment is known as linear low density polyethylene. That is LLDP. That comes between LDP and HDP, right? Okay. Okay. There are mainly two type of polyethylene. One is low density and one is high density. So for it, that they two have two extreme properties, right? To balance out the properties, some of the customer requirement or as the science developed, you know. So what they have done, they have mixed some of the polyethylene chain with octene elastomer, right? For that, they will make a small branching instead of large branching. Here you can say it is a very large branching, right? Right. ऐसे साइड ब्रांचिंग ज्यादा है ना इसमें, लीनियर Mhm. नहीं है ना ये, ऐसे अलग अलग तरीके से चेन निकला है देखो, पर मतलब ऐसे डायग्राम में, राइट? Right. सो फॉर दैट हियर व्हाट यू कैन सी, इसमें भी नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा है, लेकिन इसमें कैसे स्मॉल ब्रांचिंग है, व्हेयरएज एचडीपी में सिर्फ एक दो ब्रांचिंग होता है, मतलब ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द चेन, बट Mhm. एलडीपी में मोस्टली हाई ब्रांचिंग होता है, right? Whereas LLDP is intermediate between HDP and LDP, right? It is also known as a copolymer. But HDP में क्या है? It is a most linear polymer. तो बेसिक जब हम ब्रांचिंग को कंट्रोल कर लेते हैं ना पॉलीमर के, जो ब्रांचिंग Mhm. सेगमेंट को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या लिनियरिटी पॉलीमर में बढ़ता है और मोर क्रिस्टलाइन रीजन बढ़ता है. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज अमरकोस, राइट? Yeah. Right. तो क्रिस्टलिनिटी बढ़ जाता है पॉलीमर का. सो एज क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज, आपका डेंसिटी ऑब्वियसली Mhm. इंक्रीज हो जाएगा. Mhm. आप जो मेटल एलॉय में काम करते हो, देन ऑल्सो मेटल एलॉय का आप जब उसको क्या करते हो, आप स्लो कूलिंग Solidification. करते हो ना, एनेलिंग करते हो मेटल, Mhm. राइट? यू आर, Right. Right. आप सरफेस क्रिस्टलिनिटी बढ़ा रहे हो ना स्लो कूलिंग करके मेटल Yeah. को. Yeah. No, that I. यू गॉट इट ना? Yeah. Got व्हाट इज it. द Got it. डिफरेंस? Thanks. So ओके अगर ओके ओके. मैं प्रोडक्ट वाइज बात करूँ तो then is there any major difference like where we can LDP and where we can SDP, like in industrial products are we using LDP products? Yeah, no, for industrial product we don't use polyethylenes. मतलब in automotive sector we don't use, right? Some of the automotive sector previously they used cross-linked polyethylene, that is XLP, for Yeah, tubes, this for hose fuel pipe and tanks. hose tube. Sorry, For fuel tanks. yeah. So that is for cross-linked polyethylene. That is a different process to make altogether. That has been XLP materials, you must be knowing, right? So, But so in if you see HDP is used for some of the, I think some of the tanks they are using it. But Mhm. what I remember is some of the HDP ka small portion of that full tank is that you are telling the HDP is there. What I remember, but I don't know whether it is not that heavily used like polypropylene. Polypropylene is everywhere in automotive. Okay, sir. Thanks. Because why it is so? Because instead polypropylene you can't use as such. But what we do in polymer, you must be knowing uh, that if you are working with related to some of the polymer, if you can draw, we generally say it is a compounding grade, right? हमने पीपी टॉल 20% कंपाउंडिंग किया, ऐसे बोलते हैं ना हम जनरली. Right. Have you heard of this? No. I have heard like a glass filled addition of additives Yeah, like yeah. PP That glass. glass is nothing but that is also a
type of reinforcement, and Yeah. talc is something that is also a type of reinforcement. So you must be into the designing team, and that part required high thermal stability. That's why they have put glass in that, Right. right? Also, there are some segment also the carbon fiber is there also, chopped carbon fiber. No doubt. Also, Yeah. So you're telling the glass field we are adding for to give the strength or that strength also, and also high thermal resistance as okay. compared to talc grade कैल्शियम फील्ड ग्रेड ग्लास फील्ड जो फाइबर फील्ड ग्रेड रहता है आपका मोस्टली ग्लास फील्ड और आपका आर आपका कार्बन फाइबर फील्ड रहता है वो ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस देते हैं मोस्टली ग्लास फील्ड ही यूज होता है थर्मल रेजिस्टेंस के केस में क्योंकि आपका एचडीटी एक पर्टिकुलर टेस्ट है आपको पता रहेगा हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर बोलते हैं Okay. So it दैट इंक्रीजेस क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट यूज करना है ना तो आपको अगर थर्मल चीज में कोई पे यूज कर रहे हो अगर सपोज okay. आप So you इंजन meant to पे say for thermal stability we are using glass field, right? yes, for thermal stability or high modulus, What about especially glass talc field. field? If I compare talc field and glass field, Yeah. uh, then where we are using glass field? Sorry, talc field. Talc field is mostly in automotive sector. You are using in bumpers. कार का जो बम्पर रहता है ना Why we are adding? Which by adding what property we are improving? look, it's not only talc field, it's 20% talc field with rubber also, right? So we PDM are plus balancing EPDM. out the yeah. EPDM is now not nobody use. Now they're using this Vista Max, Engage, these all the type of elastomers. It was previously EPDM rubber, PP के साथ यूज करते थे, but they have now developed some of the ethylene based, octene butane based elastomer that has been used with polypropylene. So what we are doing there is balancing out the properties like mechanical properties with impact properties. That as I told you yesterday, we need to balance out the properties, right? Yeah, that's what for talc field, to get which property we are adding talc field. For glass field, you mentioned that for increasing thermal. Okay. For talc film, mostly modulus type of metal. Once is you know what a tensile strength, Yeah, right? That's जो strength मैंने बोला तो एक रहता है one is strength and one is modulus, right? right, When it required polymer is a viscoelastic material, so it may possess some of the strength, but it does not possess any type of modulus. That linearity in the material is not there. So for increasing the linearity of the material, what you are adding is talc. So talc will increase the modulus of the polymer. That is known as tensile modulus or Young's modulus लोग बोलते हैं. okay, Now get it? yeah, got it. Basically, where we need a flexure modulus part, Yeah, if any impact load will come, it should not break. So we are going for talc field and with rubber. with rubber, and Uh, where with thermal point of view, we are going for glass field. yeah, thermal point of view, mostly for thermal point of view, जहाँ पे thermal stresses आता है. आप कब इफ आर गोइंग टू इनटू डिजाइनिंग आप रहेंगे तो कभी Yeah. कभी देखो ऑटोमोटिव में ऐसे भी रहता है रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस यू हैव टू गिव अस द रिजल्ट व्हाइल फ्लेक्सुरल टेस्ट स्ट्रेंथ और मॉडुलस एट 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री ऐसे भी बोलते हैं ना कभी कभी ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट Yeah. राइट दैट मींस इस थर्मल के साथ आपको कितना मॉडुलस आ रहा है वो देखना चाहते हैं आपके मटेरियल में बिकॉज पॉलीमर क्या होता है ना टेम्परेचर सेंसिटिव है राइट एज Right, right, टेम्परेचर इंक्रीजेस पॉलीमर का जो मॉडुलस है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि पॉलीमर विस्कोइलास्टिक नेचर रहता है मोस्टली right, right, पॉलीप्रोपिलीन ये right, सब right. so it is not a like rigid or crystalline it has both the region like crystalline region also amorphous region also so ये जब चेन हाई टेम्परेचर में जाता है तो चेन क्या होते हैं ना फ्लेक्सिबलाइज हो जाते हैं तो इसलिए उसका मॉडुलस डिटोरेट हो जाता है ऑल्सो स्ट्रेंथ भी डिटोरेट हो जाता है फॉर दैट व्हाट प्रॉपर्टी वी हैव टू चेक हम देखते हैं कि कब तक पॉलीमर का स्टेबिलिटी रहता है इसलिए हम क्या करते हैं we generally do HDT heat deflection temperature also high temperature tensile also high temperature flexural also right for while considering the design approach of polymer right Right, right. Because I have so, seen mainly in automotive grade they are using PP plus glass field glass field for getting yeah for where they were need a more strength kind of and uh, modulus mass strength modulus section glass modulus. field give a good But and right flexural now, modulus yeah, but right now you told for modulus we need that we are adding talc field. So no I no no Look
You told me why you are adding torque field, right? Your Right, question right, is that. right, I right. told you for torque field, if you want to get a modulus, you have to add torque. But where there is a more modulus is required, you have to add glass field, because glass field will give more modulus than torque field. But Okay, torque field comparative where low costly. modulus is sorry. Okay, so we can compare that if we need more modulus, we go for a glass build, right? That's what I Yes. understood. Yeah. But But cost if point of view, which one is? I think glass build is more costly, right? yeah, glass field anyway it is costly. Okay, Depending upon the glass, आप कौन सा type का glass use करते हो, there are many types of glasses, treated glass. okay, got it. Maybe one request, maybe not now, maybe that selection of material, maybe you can put your insight. Maybe Okay. I hope this is a part of agenda in that syllabus. Also, look, first two class is a basic classes. Okay, What I understood from a syllabus. These are very basic classes. We need to just tell you what are the things, basic things involved in this. Okay. okay. So for like as you are saying me that you need to check for, so we'll see whether one class or one or two class of selection of material, how for designing, that I Oh, can talk yeah, and yeah, please. yeah, Thank you. right. So these are the addition polymers. Okay, monomer of different monomers of addition polymer, as you can see, right? So this is ethylene, and you are making polyethylenes, and from that polyethylenes you are making plastic bags, bottles, toy, electrical insulations, right? From propylenes, right? From propylene, what you are getting? You are getting polypropylenes, and you are getting bottles, luggage, sorry, bottles, luggage, clothings, many more, right? Carpet, right? आपका टॉपर वायर का टिफिन बॉक्स भी आता रहेगा, अगर देखा रहेगा वो सब पॉलीप्रोपिलीन का बने हुआ रहता है मोस्टली, राइट? पॉलीस्टाइरीन में आप क्या देख सकते हो ना, जैसे ड्रिंक कप हो गया, अब जो ड्रिंक्स के लिए जो कप लगते हैं, मोल्डेबल पार्ट्स हो गया, राइट? सीडी केसेस रहते थे पहले पुराने जमाने में, अगर आप सीडी केसेस देखते होंगे ना, वो पहले जैसे पूरा जो टूट जाते थे गिरने के बाद, वो सब पॉलीस्टाइरीन का बना हुआ था रहता था। वो ट्रेस रहता था पहले पॉलीस्टाइरीन के, ये सब पॉलीस्टाइरीन के थे। और फोम तो आप देखते ही रहोगे, जो नॉर्मली जो आपको बोलते हो ना आप, एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरीन फोम, ईपीएस बोलते हो, जो बहुत साफ आवाज करता है, वो पैकेजिंग में आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के, वो भी पॉलीस्टाइरीन का रहता है। दैट इज एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरीन, राइट? आप पीवीसी बता रहे हो, तो एडिशन पॉलीमर और पीवीसी, देन यू आर गोइंग फॉर पाइप्स, ट्यूबिंग, फ्लोर, फ्लोर कवरिंग आपका आता है। आपका पीवीसी लेदर का सीट आने लगा आजकल ऑटोमोटिव में, यार नॉर्मली कहीं पे पीवीसी लेदर का सीट आता है, बोलते हैं ना पीवीसी लेदर है। दीज आर ऑल मेड ऑफ polyvinyl chloride, right? And also for teflons, ptfe, you are going to non sticky coatings जो भी रहता है ऑटेंसिल में, ऑटेंसिल का जो पार्ट रहता है, जो आप बोलते हो ना नॉन स्टिकी, जो भी रहता है चीजें रहता है ऑटेंसिल्स, वो सब पीटीएपी से बना रहता है। अभी पीटीएपी का रॉड भी आया, मोल्डेड पार्ट्स भी आते हैं अलग अलग टाइप का, बट इट्स ए कैटेगरी ऑफ, इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट यू से कम्योडिटी प्लास्टिक, इट इज ए कैटेगरी ऑफ स्पेशलिटी प्लास्टिक, क्योंकि पीटीएपी जहाँ पे स्पेशलिटी एप्लीकेशन रहता है उधर ही यूज होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल एज कम्पेयर टू ऑल दीज फोर मटेरियल्स अबव, राइट? बट इट, Yeah. सो ऐसे और भी पॉलीमर्स है, लाइक आपका जो कि डेली यूजेस में आप यूज करते हो, दैट यू कैन एनीवे, आप अगर पॉली मतलब दीज आर द पॉलीमर दैट इज मोस्टली यूज, दैट्स व्हाई आई लिस्ट आउट दीज पॉलीमर्स, राइट? So you know polyethylene is a most Hello, used polymer. can you hear Yeah, me? yeah. You told about some talc. Is it talc addition or during the glass fill addition and other thing you are discussing? What is that TALK talc or what is that you are adding to that? I did not get your question. What you saying? That bumper, in bumper you told Yeah, something. yeah. Okay, okay. I got you. Good. Yeah. So why I'm saying that? So our discussion point of view, that why what we are discussing, that he has a doubt that whether we are using, why we are using talc, and where we are using glasses, right? And Yeah, why is he that was no, talc? You are talking about talc means minerals, na?
Talc is minerals. Calcium carbonate also you can add. That is minerals. Mica is also minerals. But depending upon your material development quality, you need to select the add your reinforcement material, right? Where आपको अगर कई जगह पे talc से काम बन रहा है, if you are getting good properties with talc and you are matching the specification of your customers, तो आप उसमें ग्लास फाइबर नहीं ऐड करने वाले हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक तो उसका स्पेक से ऊपर हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी, पहली बात। दूसरा बात, ग्लास फाइबर इज वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू टाल्क, राइट? डू गेट माय क्वेश्चन? Okay. Right. Yes, yes. So also where you require higher thermal properties also and higher modulus also, there you are going to add glass fibers. Not in every properties, but depending upon that properties, you have to select the what kind of reinforcement you are going to add to the polymer. So you have a customer specification sheet, right? जो आपको देता है, मिलता है मटेरियल डेवलपमेंट से पहले। ऑटोमोटिव कंपनी में जो भी होगा उनके पास, बहुत लोगों के पास आता है, सबके पास आता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट उसका स्पेसिफिकेशन शीट क्या है, right? For that part you require, then when you get the specification sheet, what you do material selection, as he told me earlier that sir material selection क्या क्या होता है। And obviously in most of the automotive industry they have also polymer engineer with them, right? So they select the material for that particular application, but what they do after selecting the material, they will give you to few of the his suppliers, right, in India. Okay. So we require this type of material to be produced. So when this specification sheet will come to these suppliers, what they do, they will figure out the which type of, if talc is, if we are going to use mineral reinforcement, which type of mineral reinforcement we are going to use. Okay. In reactor, the organic items only can be done reacted. So this has to be done only in compounding. If mineral is there, it is only. Yeah. It is all about compounding. It is nothing to do with reaction. It has to be done with extrusion. Okay, understood. Compound. And Right? one more thing you mentioned, in the talc feed, we are adding EPDM. Yeah, some previously there are people are using PP there because PP EPDM is the most suitable material previously, but nobody nowadays adding EPDM. Everyone is adding engaged elastomers, but that is nothing but butene octane elastomers, right? Or some of the engaged, I am telling about the trade name that is manufactured by Dow Chemicals, is a very big company, right? And some of the other grades. So nowadays, EPDM use of EPDM is very less with PP because they have developed. What is the basic reason to be adding elastomer? Elastomer improves the impact properties of polymers. PP does not have a significant good amount of impact properties. But you mentioned that impact we are adding talc field. What I mentioned is with talc we have to add Okay. rubber Means, to improve the impact properties. Only okay, talc will only improve the modulus. Okay, got it. Now you clear? Clear. Thank you. Yeah. And what about one more point in the dashboard? Sometime glossiness we are Yeah. considering. So can you give some insight about that to achieve glossiness? What we have to add? देखो it depend upon the what I told you. It depend upon the कार ऑल्सो, राइट? अगर आपको कोई एक्सपोर्ट ग्रेड है, या सपोज मैं आपको बताता हूँ, गिविंग अ गुड एग्जांपल, आप ऑडी का गाड़ी ले रहे हो और मारुति का गाड़ी ले रहे हो, राइट? Yeah. यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. राइट। तो मारुति क्या करेगा, तो डैशबोर्ड में तो वो एबीएस यूज नहीं करने वाला है, एएसए नहीं यूज करने वाला, राइट? तो क्योंकि उसका भी वही प्रॉपर्टीज आ जाएगा, एबीएस और एएसए लिया ना, देन और ऑल्सो एबीएस और एएसए में ग्लॉसीनेस ज्यादा है क्योंकि वो एक्रेलिक्स पॉलीमर है, राइट? मतलब स्टाइरिन एक्रेलिक्स, तो इट हैज अ गुड, इन केमिस्ट्री वाइज इट हैज अ गुड सरफेस प्रॉपर्टीज, राइट? बट व्हाट हैपन इन polypropylene also you have to match the gloss, right? So for that purpose when polypropylene आप लेते हो जैसे लो एंड गाड़ी के लिए, लो एंड कार के लिए, तो देयर आर सम सर्टन सिलिकॉन बेस्ड एडिटिव्स जो यूज करते हैं वो लोग ग्लॉसी बढ़ाने के लिए। पॉलीप्रोपिलीन में 1% 2% ऐसे डालते हैं कि उसका सरफेस ग्लॉस बढ़ जाए। जो भी आप ये डालते हैं ना, कलर डालते हैं ना, जो भी कलर डालेंगे उसके साथ सिलिकॉन एडिटिव डालते हैं ताकि वो सरफेस का ग्लॉस बढ़ जाए। और उसका और एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ग्लॉस बढ़ेगा ना, अगर आप स्क्रैच करोगे ना तो स्क्रैच भी नहीं दिखेगा इतना जल्दी आपको। एक स्क्रैच रेजिस्टेंस भी रहता है ना, कि ऐसे गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, Right. जो भी पार्ट रहेगा।
right? Okay. So So you mean to say for that if styrene every based, the polymer that automotive industry is using nowadays, yeah, you're listening to me, the polymer that they are using in nowadays automotive industry, these all are been, most of the polymer has been compounded with 3 to 4 types of additives, right? right. Because in single polymer you cannot achieve such मतलब बैलेंस प्रॉपर्टीज, बिकॉज आपका ऑटोमोटिव में कितना स्पेसिफिकेशन रहता है, वो सब प्रॉपर्टी अचीव करना बहुत Yeah, मुश्किल yeah, रहेगा yeah. एक Sometimes we सिंगल have a पे। lot of तो proper requirement to हाँ, achieve that. Yeah. so these all are been compounded, and all, and while you are compounding you have to select certain type of additives, वो जो कि आप आगे पढ़ोगे क्या क्या additives कैसे कैसे यूज होता है। जैसे मैं फिलर का एक एग्जांपल आपको दे दिया है, जो आर आस्किंग मी, कि फिलर मॉडुलस यूज कर बढ़ाने के लिए यूज होता है, और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही है, प्लस उसका मेन रीजन जो है वो मॉडुलस बढ़ाता है। ऑल्सो सर्टन फिलर है जो मॉडुलस के साथ साथ थर्मल प्रॉपर्टीज भी बढ़ाते हैं, जैसे ग्लास फाइबर, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स की बात की, राइट। इवन ऑल्सो टॉल्क से भी थर्मल प्रॉपर्टी बढ़ेगा पॉलीमर का, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल सेंसिटिव पार्ट, अगर इंडस्ट्री के जो रेडिएटर्स रहते हैं उसके आजू बाजू अगर आपका प्लास्टिक का पार्ट है, तो आप देखना हमेशा ग्लास फील्ड ही यूज होता है, वो भी पीपी का ग्लास फील्ड नहीं यूज होता है, उधर नाइलॉन के साथ ग्लास फील्ड होता है, पॉलीएमाइड ग्लास फील्ड यूज होता है, ये Why? देखा रहेगा। Any specific reason? PP nylon? Why? PP is a low temperature polymer Okay, na, okay, okay, got it. Nylon polyamide plus is a glass high field. temperature polymer, Yeah, yeah, nylon plus glass so field. not nylon is a high temperature polymer, Yeah, yeah, right. and some of the part they are using polyphenol sulfones, वो भी बहुत ज्यादा high temperature polymer है। Right, right, you're right. Getting my point? Getting your point. So what we can say that if surface glossy by default, if it's a styrene based product, so no issue. But Yeah, if it's a PP, then we have to add a silicone based additive 1 to 2%. yeah, that's why they are Great, great, yeah. Thank you. that's, नहीं तो अगर एबीएस एएसए से बना रहे हैं ना, तो उसमें इतना ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसका दे देगा ग्लॉसी कभी कभी। लेकिन आजकल ऑटोमोटिव वाले, ये जो नो एवरीथिंग इज अबाउट एस्थेटिक, राइट। Right, 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 right. So aesthetic part आता है that there are many suppliers, they are making means like they are doing such R&Ds that अगर हम ऐड करके ग्लॉसी ला लिए, फिर उसका स्टेबिलिटी भी तो रहना चाहिए उतना टाइम तक, Right, right. राइट। वेदरिंग आपका कैसे सनलाइट उधर पड़ता रहता है, सन से भी ऐसे देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सन से यूवी रे से पॉलीमर ससेप्टेबल होकर क्रैक हो जाए, या उसका सरफेस खराब हो जाए, मतलब गंदा दिखे, डस्ट आ जाए, ये सब चीजें लेके वैसे एडिटिव डेवलप करते हैं कि केमिकल ऐसे डेवलप करना है कि इससे कोई इफेक्ट ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? Right, right, right. Getting your point. Yeah, so it's not always a single polymer, it's always a compounded polymer they're using in automotive. Very few parts they are using single polymers. All our polymer has been compounded while using in automotive. Yeah. Tell me, I mean, I'm busy a little bit. Tell me. Sir, yeah. But okay. No, no, okay, I got it. Maybe it's suddenly calling. Maybe if he sends, maybe tomorrow morning we can discuss because I'm busy in some urgent discussion. Yeah. I think that's what. I think someone mic has been on, right? Okay, but one doubt. Okay, what I understood from him, he has not raised a PO because he told me when we are raising a Sir, PO. can you please switch up your mic? Mute your mic. Okay, okay, I got your point. I got your point. I am urgent discussion going on. So maybe is it okay? Is it okay? Eight. Is it okay? Eight. Okay, I will come. I will discuss on that. Sure. That's what I already came. I'm coming early morning. So already. Hello. So, Yes, sir, please carry on, sir. His mic yeah, is off now. I have more oxygen mic. So, so these are first of all, I told you that it's what are the monomer for condensation addition polymer, right? So these are the monomers for condensation polymer, right? And so first your is polyesters, right? So polyester I told you earlier. Then you have to, if you have a acid group, and when you have a hydroxyl group, you can make polyesters, right? Polyethylene terephthalate PET का बात किया था हम लोगों ने, right? What is the application of PET? आपका polyester का कपड़ा आता है,
राइट। पेट का बोटल्स आता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स, पेट का फाइबर्स आता है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स ऑल्सो यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिस्टर्स, राइट, इन योर डे टू डे लाइफ। ऑल्सो देयर आर अदर पॉलिस्टर्स ऑल्सो लाइक पॉलीब्यूटिलीन टेरिथलेट। पीबीटी का आपका इंजेक्शन मोल्डिंग ग्रेड्स आता है जो कि ऑटोमोटिव में यूज होता है, ग्लास फिल्ड पीबीटी, राइट। यही तो पीसी पीबीटी का आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सॉरी, वन डाउट सर, या ये जो है ना ये कंपोनेंट्स, इसको देखकर ये कंपाउंडिंग बना हुआ है या इसमें रिएक्टर में बना हुआ करके कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एडिशन है ये कंपाउंडिंग का है, ये एडिशन जो है ये रिएक्टर का है, वो ऐसा रुको, कुछ? वेट। If it is a mineral fat, when you are getting a part, right, what you do first of all, you are going to cut the part and do the ash content, right? आपको कितना उसमें कुछ है क्या, जला जला के देखते हो ना पॉलीमर हाँ, पे, राइट। और when you do a ash content in a oven, what you do usually, आप देखते हो उसमें अगर मिनरल है, अगर आपको टू, क्योंकि पॉलीमर में कैसे वेट परसेंटेज में डालते हो ना, 20% फील्ड में मतलब क्या है, 80% पॉलीमर है, 20% आपका कोई भी रेनफोर्समेंट रहेगा, मिनरल हो गया, फाइबर हो गया, राइट। ओके। ओके, अगर एश कंटेंट 600 650 800 में कर रहे हो, अगर आपको मिनरल मिल रहा है बचा हुआ, राइट, दैट मीन्स इट इज नॉट मेड इन एनी काइंड ऑफ रिएक्टर, क्योंकि मैंने कल भी बोला है पहले, क्योंकि रिएक्टर में कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मास का रिएक्शन हो नहीं सकता, राइट। नहीं, पॉलीमर आपका, और अंडरस्टूड। पॉलीमर आपका, या ये जो कंपोनेंट लिखा है ना, कंपोनेंट्स, उसके नीचे जो लिखा है वो उसका H2O CH2CO2 ऐसा करके लिखा है ना, ये कहाँ देख पे? कर क्या, ये जो थर्ड रो, थर्ड कॉलम में ओके, फॉर्मेट टाइप एंड कंपोनेंट्स जो लिखा है, इसको देख हाँ, कर these are यहाँ, components of, these are raw materials to make polyesters. तो इसमें कंपाउंड, इसमें वो मिनरल्स और वो सब इसमें नहीं आएगा? नहीं, these are raw materials. Tomorrow I told you na, this is acid and hydroxyl group that is reacted to make and polyester. ओके, सो यहाँ पर जो भी These हम लिख, I what I am seeing you is your raw material to हाँ, make polyester. These are organic raw materials. That is to nothing to do with compounding. Compounding is somewhat different. So ओके, when I tell you, yeah, that is nothing to do with compounding. So don't mix this with compounding, right? What इसमें I इसमें जो भी लिखा है सब रिएक्टर का ही आइटम्स है, यानी कि हाँ, तो these are the raw materials to make polyesters in a reactor. ओनली दीज आर ऑल बेस मटेरियल ओनली, Yes, that is, वर्ड्स जो भी लिखा है ऑल आर बेस मटेरियल। yeah, these are best material ओके, to make a polyester. What I to write in like monomer of condensation polymer. I write it now. ओके, ओके, Monomer of it is visible to all now. There is monomer of condensation polymer, Yeah. right? So there is nothing to do with grades on or And like there minerals is and TG, glass transition temperature, and this melting temperature, this right? melting temperature that I'll explain, Yeah. right? Because I think for injection molding, these both are playing a very This critical is role. very important thing for injection molding. Maybe Yeah, I know. yeah. Yeah. So these are the monomers, right? When for polycarbonate, you are required a bisphenol A, then right, then you require a epichlorohydrin, right? For polycarbonate, it's also a condensation polymer. For nylon, as I told you, you require a diamines and diacid, right? That is adipic acid and hexamethylene diamine, right? I told you tomorrow. Nylon 6, you require only polycaprolactam, that is ring opening polymerization, because I told you earlier, the polymer which has functional group can only go through condensation polymerization. The polymer which has double bond can only go through addition polymerization, right? Yeah. ये मैंने कल बताया ना ये, Yeah. am I correct? Yeah. यस आपको सर, बेसिक, बताया ये इसमें सब कुछ कंडेंसेशन ही है ना? ये कंडेंसेशन है, मैं आपको नथिंग टू डू विथ दिस, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग यू दैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, because you need to give me a response so that I can know that you are understanding, Yeah, right? absolutely. It should be a both way. मतलब this should be connected. Yeah, discussion. Yeah. Then otherwise I can, मैं आता और आपको स्लाइड दिखा के चला था, there is no नहीं, point that's of, we are aligned with you. Yeah. ये दूसरा जो आप बता रहे थे ना सर, ये कंडेंसेशन के अलावा दूसरा, वो जरा दिखा। एडिशन.
एडिशन वाला क्या डिफरेंस? Okay, addition tomorrow yesterday I told you that when addition polymer they should have a double bond to make a addition polymer. कहीं पर भी डबल बॉन्ड रहेगा तभी उसको एडिशनल बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड रहेगा मोनोमर में तभी जाके वो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकता है, राइट। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है जैसे एसिड, हाइड्रोक्साइल, राइट, एमाइन, ऐसे है ना, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा। अगर उससे पॉलीमर बनता है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर कोई पॉलीमर ऐसे डबल बॉन्ड से बनता है तो वो इट इज नॉट एज एडिशन पॉलीमर। एंड आल्सो आई टोल्ड यू यस्टरडे एडिशन पॉलीमर में आपको कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता, whereas condensation polymer में you are getting many types of byproduct, right? बट इसमें इसमें जो फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लाइन आ रहा है, इसके लिए डाउट आ रहा है। सर ऑक्सीजन इट इज नथिंग, इट इज COOH। ये जो है ना ये फॉर्मूला, ये पॉलीमर है, दिस रो इज पॉलीमर, राइट। ये जो पूरा रो है ना ये पॉलीमर, राइट। ये जब आप कभी एसिड लिखते हो ना, आप ईस्टर लिखते हो ना, उसमें भी C डबल बॉन्ड ओ रहता है ईस्टर में। वो आपका केमिस्ट्री में मत जाइए वो केमिस्ट्री ऐसा आपको नहीं, बताने तो देखकर अगर ना। समझना है तो कैसे ये अरे सर, कंडेंसेशन और वो एडिशनल पॉलीमर करके ये टेबल से क्या, अगर डबल बॉन्ड देखेंगे तो डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, no no no, look, when double bond is there in some of the monomers, right, जो कि पॉलीमराइज होके ऐसे सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं ना इन मेन बैकबोन चेन, ये मेन चेन में है कि आपका डबल बॉन्ड, ये मेन चेन में नहीं है, साइड चेन में है, C डबल बॉन्ड O है, राइट। सो इट विल नॉट रिएक्ट। ये जो एसिड का ग्रुप है COH एंड OH, ये रिएक्ट होके CO, तो जब ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का आउटर सेल का वैलेंसी दो बचा हुआ है, एंड कार्बन का 4 वैलेंसी, उसको कन्वर्ट करना रहता है। तो क्या करता है ऑक्सीजन, तो वो 2 डबल बॉन्ड क्रिएट करता है कार्बन के साथ, राइट। नाउ आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी कैसे भी करके स्टेबल होना है, 2 बैलेंस लेके, तो इसलिए क्या करता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, इसलिए वो C डबल बॉन्ड हो, नथिंग टू डू विथ पॉलीमराइजेशन ऑफ दैट। मेन चेन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा इसमें, हाँ, इसमें मेन चेन में आपको डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं। वो अगर देखेंगे मैं तो आ जाएगा ये कंडेंसेशन भैया पॉलीमर। साइड में से डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी आपको ये करने के लिए वो डबल बॉन्ड है, मेन चेन में नहीं आएगा इसका डबल बॉन्ड। मेन चेन में अगर डबल बॉन्ड आया जो कि पॉलीमराइजेबल है, तो फिर वो एडिशन पॉलीमराइजेशन पे जाएगा सीधा, वो कंडेंसेशन पे आएगा ही नहीं। गॉट इट, ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। राइट। और मोस्टली आप याद रखना, जो पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब जो पॉलीमर है ना, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट, PMMA, जो प्लेक्सीग्लास बोलते हो आप, PMMA बोलते हो ना, राइट, एक्रिलोब्यूटाडाइन स्टायरीन, राइट, ASA, ABS, ये सब एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, राइट। वेयरएज नाइलॉन, पेट, PBT, पॉलीकार्बोनेट, ये सब जो पॉलीमर है ना, ये सब कंडेंसेशन से बना हुआ पॉलीमर, राइट। एक समझ और गए? डाउट, कल आप जब बता रहे थे, क्राफ्टिंग बता रहे थे ना, हाँ, क्राफ्टिंग बी डन इन रिएक्टर आल्सो, और क्राफ्टिंग इज ओनली रिलेटेड टू कंपाउंडिंग? no, grafting is mostly done in reactor, but what I told you, if you remember, the some of the grades, grafting grades, they have now what they do, they are doing it blending in the extruder, right? There is a difference between blending and compounding. ब्लेंडिंग के कब बोलते हो, जब भी कोई उसमें मिनरल नहीं रहता, ओनली 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मिक्स करते हुए एक्सट्रूडर में, राइट, उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, राइट। जब कोई मिनरल के साथ आप उसको प्रोसेस करते हो ना, देन इट इज नोन एज कंपाउंडिंग। गॉट इट? ओके। ठीक है। ऐसा भी है, आपको आपने ये भी देखा रहेगा इंडस्ट्री में PCABS बोलते हैं, PCA से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग, 2 पॉलीमर का नाम लेके बोलते हैं, पॉलीकार्बोनेट बेस का ब्लेंड है, बोलते हैं ना बहुत जगह पे। आपने मोबाइल का पहले कवर देखा रहेगा तो वो PCABS लिखा रहता था उसमें, PC-ABS। So that means that has been the two grade. One is PC, polycarbonate is a different polymer, ABS is a different polymer. The both polymer has been mixed in a extruder. ओके, That's why it is written as PC-ABS. वन मोर डाउट सर, सिंपल, सॉरी,
ये अगर ये एक तो प्लास्टिक हम बता रहे हैं, एक ब्रूटाइल रबर भी इसमें हम लोग कंपाउंडिंग कर सकते, रिएक्टर में डाल के पॉलीमराइजेशन। सर सुनिए, मैं आई विल कंफर्म जस्ट। मेरा मेरा एक डाउट इतना ही है, उसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट उसका टेम्परेचर रहेगा तो रिएक्टर में कौन सी टेम्परेचर हम सेलेक्ट करना पड़ता है? मतलब आई डिड नॉट गेट यू, वन सेकंड। टेम्परेचर ऑफ इसका मेल्टिंग, उसका जो है ना मोल नो 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 नो, रुक रुक। हम जब भी कोई चीज रिएक्टर में मिक्स करते हैं ना, हाँ, वो ओलिगोमर रहता है, नहीं तो मोनोमर फेज में रहता है। ओके हाँ, पॉलीमर नहीं बनता तब तक। ओके ओके ओके, वो दैट डिफरेंट। इज केमिकल सिंथेसिस मेथड, यस। जब हम एक्सट्रूडर में मिक्स करते हैं कोई चीज, वो मोस्टली पॉलीमर रहता है, उसमें खाली जस्ट ग्राफ्ट कर लेते हैं, इसलिए एक्सट्रूडर में जो भी ग्राफ्टिंग होता है ना, उसका एफिशिएंसी बहुत खराब है, उसका प्रॉपर्टी आपको बैलेंस आउट नहीं मिलता। हाँ हाँ, ये प्योर पाउडर फॉर्म में रहेगा ये। हाँ, ये एक्सट्रूडर में जब करते हैं, जैसे ऐसे दो तीन मटेरियल है, दैट आई कैन एग्जांपल, कुमो करके एक मटेरियल है आपका इसमें, कोमो करके साउथ कोरिया का कंपनी है, जो क्या करता है, ऐसे ऐसे एबीएस का एक्रिलोसाइन देता है और एबीएस का ऐसे पाउडर देता है आपका ब्यूटाडाइन का, उस दोनों को बोलता है इतना परसेंट आप बेंजल पेरोक्साइड करके एक इनिशिएटर है वो डालो और आप एक्सट्रूड कर दो, तो वो रिजल्ट आता है। तो मैंने खुद को, जो वेल आई एम इन कंपनी, तो मैंने खुद देखा है उसका, वो जो एक्सट्रूड करके जो पॉलीमर मिलता था हमें, और हमारे पास जो एबीएस का प्योर कुमो का पॉलीमर था, वो दोनों में भी प्रॉपर्टी लगो ना, तो प्रॉपर्टी में इनका प्रॉपर्टी में इतना डेविएशन नहीं था, मतलब सेम। अगर हम 5-6 स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं ना पर बैच में, तो 5 स्पेसिमेन करो तो इसमें रिजल्ट में डिफरेंस नहीं था, वायरस एक्सट्रूडेड ग्रेड में बहुत डिफरेंस आता था, ओके, राइट। बट तो परफॉर्मेंस एक्सट्रूडर डिफरेंस रहा। सो ऑलवेज एक्सट्रूडर जो ग्राफ्टिंग होता है ना चीजें, उसमें रिजल्ट वेरिएशन बहुत आता है, ओके, जो ब्लेंडिंग। Are you talking बट about granular formation which you are putting नो in नो नो, ग्राइंडर input? नॉट इज नॉट इज जैसे केमिस्ट्री डॉट, अभी कभी कोई पॉलीमर के ऊपर कोई पॉलीमर चेन लग रहा है ना एक्सट्रूडर में, वो रेंडमली लगता है, What तो is आप उसको extruder? Because I'm not aware about this. Just generally injection molding, I'm aware. So एक्सट्रूडर maybe, इज समथिंग दैट, या द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मेक ग्रैनुअल्स, पॉलीमर ग्रैनुअल्स मिक्स करके दो पॉलीमर को अगर कोई ग्रैनुअल बना रहे हो, तो वो एक्सट्रूडर से ही बनाना पड़ेगा। so how we are making okay, two polymer in a powder form we are mixing Two or what? two polymer is a powder form, maybe in a, one is powder form, one is pellet form. You have very big silos are there. You have to put in the silos. It's all continuous process, right? Where you have to where you have to take the material from the silos. All are been PLC controlled. You have to only control the feeding rate of that hopper. कितना इसका इतना material जाएगा, इसका इतना material जाएगा, depending upon the ratio that you want to mix, right? Getting my point? Okay, so you mean to Depending upon say the ratio that you want to mix, you have to you feed mean to that in the say for machine. let's suppose PCABS, then you mean to say granular is already a one granular. If I pick, it's a composition of both PCABS. I was No, thinking no, 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 that no, no, we'll no. put If you want to separate make a, PCA and separate ABS. sorry. If you want to make a PC-ABS blend, then you have to take PC granule separate and ABS granule separate. So that's what Yeah, there are two silos, right? Or you can mix in a mixture, high, there's a 50 kg, 100 kg mixture, according to your composition, 70-30. Maybe if your polycarbonate is 70%, ABS is 30%. That means you have to calculate, right? 70 ग्राम ये लिया तो 30 ग्राम वो लेना पड़ेगा आपको. Then you have okay. to mix it. And you have to put in a silo. Then वो that silo से आप एक साथ बड़े बड़े साइलो में जब जाता है, then there से continuous आपका एक्सट्रूडर में एक्सट्रूड होता रहता है, because extruder in industry scale is very large. There are extruders like 10 kg per hour to 3000 kg per hour also, right? Depending upon the grades. Once grade is set in your line, means they'll run the extruder at 1000, 1500, 2000 kg per hour. So that is that much bulk of material they are producing, right? Okay. You're getting my point now. Yeah, we are getting your point. So these are the monomers, and this is the polymer that is made out of this mono, right? So these are the trade name: polyesters, Dacron, Mylar. Depending upon the, like, they are very big industry, giant in chemical industry, so they have given their certain trade name to their polyesters. So that is the trade name, nothing to deal with chemistry and all,
right? So now yeah. So who is asking about what is the difference between TG and TM? You have asked me, right? Yeah. What is the difference? What is glass transition temperature and what is melting temperature and what is crystallization temperature? There are actually three temperatures are there in polymer, right? One is glass transition temperature, one is crystallization temperature, and one is melting temperature, right? Yeah. So what happened? Uh, when a polymer, right? So mostly polymer is what? A semi-crystalline material, right? Or amorphous material, right? So none of the polymer is completely crystalline. So that's why when we consider any kind of polymer, we always says that it is 70% crystalline, 60% crystalline, 50% crystalline polymer, depending upon its different polymers, right? So, so you must be knowing. So, what is glass transition temperature? Your curiosity, right? So, it is nothing but a temperature below which your polymer is very hard, right? It's like a glassy, means glass जैसा है ना, so it's like a rigid structure. आप अगर उसको ड्रॉप करोगे ऐसे सटन, आप टीजी के बहुत नीचे, टीजी से 5-10 डिग्री नीचे जाके अगर ड्रॉप कर रहे हो तो वो पॉलीमर क्या होगा ना, टूट जाएगा. इट्स a very hard material below that temperature, and above that polymer is mostly what you can say showing some of the flexibilities in polymer. There are some flexibilities in polymer above TG, but in below TG it is completely hard and glass-like structure, right? If I want to go, if we are going to drop it, then it will break, right? तो वो होता है TG, that is known as a glass transition temperature. As the name suggests, glassy phase to a somewhat flexible materials. That's the temperature range where the polymer transit from glassy phase to a melting, glassy phase to a flexible phase. Right? Got it? How it will break? I didn't get your point. Sorry, maybe. Yeah. You So mentioned that it will break. let us consider one example. Right? Nothing to do with polyesters, because I have not written any glass transition temperature of polyethylenes also. So I'll give you example of polyethylenes and polypropylenes also. Polyesters का बाद में मैं बताऊंगा, right? So every polymer is the same concept in glass transition temperature, right? What happen if a polymer that is having you are working with polypropylenes, right? And so polypropylene has a TG of -20 degrees Celsius, -15, -20 degrees Celsius, while its polyethylene has a TG of -110, 120, 110 and 120 degrees Celsius, right? But have you seen in polyethylene and polypropylene at a room temperature? No. No, right? You have not seen in polypropylene and polyethylene at room temperature. आपने पीपी का डब्बा पकड़ा रहेगा ना, के जो खाते हो जब, और जो आपका टिफिन बॉक्स रहता है, Yeah. टॉपरवेयर का टिफिन बॉक्स यूज करते हो तो वो पीपी का ही है, पॉलीप्रोपिलीन का ही है, Right. राइट? तो वो रूम टेम्परेचर पे कैसा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसमें. वो गिरता है तो टूटता है क्या? वो नहीं टूटता ना. The flexibility is there. Yeah. हाँ, there is flexibility. Why it is so? Because at that temperature that material is flexible, right? So similarly, just assume मैंने वो पीपी के डब्बा को -20 उसका टीजी है, तो वो डब्बे को मैंने -50 डिग्री में स्टोर किया, -40 डिग्री में स्टोर किया, राइट? नेगेटिव टेम्परेचर में. आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव टेम्परेचर. इफ यू आर गोइंग टू स्टोर दैट, if I am going to store that this tiffin box at, it's a negative temperature, in a negative temperature, so what will happen? So it will break. Why it will be breaking? Because it is a TG of -15 and -20. If it will not break, it will be like this. If we drop, if I take that box and drop from certain height, it may be the case that it will break. Because why it is breaking? Because it is below its TG. TG वही टेम्परेचर आपको बताता है जहां पे पॉलीमर रिजिड से फ्लेक्सिबल होना चालू हो जाता है. एक टेम्परेचर रेंज है, सपोज -10, -15 है, तो -15 के नीचे में वो पॉलीमर रिजिड होना चालू हो जाएगा, राइट? वैसा नहीं कि -15 के So you नीचे जाने mean से to पूरा say रिजिड हो जाएगा. at particular value, if we further हाँ, decreasing in minus value, then it will start it will rigid lose, structure. it will lose the property of flexibility. It will become Okay, and rigid. yeah, And it rigid will means it will break. it will be going in a rigid way. So And the you structural mentioned rigidity उसका बढ़ जाएगा. -20 TG.
So if I convert minus 20 TG into degree Celsius, what will be the temperature? Minus 20 degrees Celsius in degree Celsius. Minus 20 degrees. Okay, okay, got it. Okay. So I'm not taking any values in Kelvin and Fahrenheit. I'm Okay. talking about negative means degree Celsius. Right. So it is not that कि -20 के नीचे चला गया तो तुरंत वो रिजिड हो जाएगा, -40 में होगा, लेकिन वो वही ट्रांजिशन टेम्परेचर है, राइट। वो रेंज से आपके जहां पे सडन फ्लेक्सिबल होना, ऐसा नहीं कि -20 के ऊपर तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, नहीं। -20 के ऊपर गया, सब फिर 20-30 डिग्री बढ़ेगा, तभी जाके थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। लेकिन कैसे, हम जब कोई इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है कि चेंज इन हीट कैपेसिटी एंड ऑल, दैट इज रिलेटेड टू लाइक फिजिक्स ऑफ द पॉलीमर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड ऑल। तो उससे वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर देता है। वो रेंज ऑफ टेम्परेचर के नीचे गया पॉलीमर तो आपका हार्ड एंड ब्रिटल है, टूट जाएगा आपका पॉलीमर। उसके ऊपर आया तो पॉलीमर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। यू गॉट इट? Got it. दैट Yeah, इज द टीजी। Because I listened that at injection molding, if we या या the temperature that very plays a very critical role, this TG. या आई टेल यू। Yeah. यस, आस्क मी। what is TG, sir? Full form? Glass transition temperature, I told you. But it's a glass transition temperature. Glass, GLSS, glass. Glass means rigid. Glass transition temperature. When polymer is going from a rigid to a flexible, right? अगर उसके नीचे जाओगे ना, ज्यादा नीचे जाओगे तो पॉलीमर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। अगर आप उसके बहुत ऊपर गए तो पॉलीमर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते बढ़ते जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज glass transition temperature. As I told you earlier also, that polymer is very much sensitive to the temperature, right? तो अगर पॉलीमर का टेम्परेचर सेंसिटिव है तो इसलिए वो टेम्परेचर डिफाइन किया गया है कि कोई भी वैल्यू आप टीजी के नीचे यूज ना करो, क्योंकि वो पॉलीमर बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। देन अगर फर्दर आप नीचे गए तो वो फिर ग्लास लाइक बिहेवियर करके टूट जाएगा। अगर सडन हाइट से ड्रॉप किया तो वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाएगा, राइट? यानी कि मतलब टुकड़ा ये टेम्परेचर नीचे जाएंगे तो ये टूटेगा, ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल रहेगा थोड़ा बहुत। उसके नीचे आपको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि उसका फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाता है, उसको फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। पॉलीमर का स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है उसके नीचे। ऐसा नहीं कि जैसे Okay. रखे रखे टूट जाएगा, मे बी देयर इज सम क्रैक डेवलप, राइट? अगर उसको आप इम्पैक्ट दोगे जोर से तो वो तुरंत टूट जाएगा, ऐसा है। आपको ग्लास रखे रखे थोड़ी टूटता है, ग्लास आपका हाथ से गिरेगा, इम्पैक्ट मिलेगा तभी तो टूटता है ना। Okay, sir. Understood. One question related to blow molding. Can I ask? Or या you mentioned for blow molding, the temperature should be high viscosity and a low MFI, right? Like HDP, right? यस यस। Yeah, but I observed few automotive component they are using PP plus GF percentage. So is it correct, or they are adding PP GF plus some additives? Or if my question is that For if they use claiming PPGF, can we be able to make the part or not? whether they are making it by blow molding or some other process. No, blow molding only. Okay. Or that's what That what I need to see whether they are using a low MFI PP or not. If they are using a low MFI PP, they can make anyway. okay. So for blow molding required a low MFI polypropylene. The high MFI polypropylene will not work in blow molding. That's why Okay, I've told them. maybe he that guy given the broader picture. Maybe again I will check, double check. I will update you also. Yeah. Yeah. Thank you. Because the basic understanding of flow of polymer in every industry, for plastic industries, is MFI. From MFI, you can, if the material is very MFI, you know the unit, right? That is gram per 10 minutes. Yeah. If polymer is One more, sir. One point. Like injection molding, right? Sink mark, radius, all there is a particular guideline. We are aware. But blow molding, there will be guideline which I'm not confident for blow molding guideline. I have gone through the course material which DP has shared, but I didn't find more guideline related to blow molding. Maybe no, it's okay. So why like it is so, I will for tell you. example, sorry to interrupt you. For example, there's injection molding, the thickness guideline, radius guideline, rib guideline. For blow molding, if there is any guideline like minimum thickness, how much,
because if you refer SMC, right, we can't go less than 2.5 for a sheet molded composite kind of a part. And for Okay, why they have not given in blow molding, I will tell you. yeah, what is that The very, sheet thickness guideline kind of, yeah, or what anything other, yeah. no, why they have not? Because in blow molding, you're listening my point, right? Yeah, please. Blow molding is not a process to develop a very controlled thickness product. Right. It is not at all a process to control the thickness of product, because whatever product you are getting, if it is a defective product, it's good. But what happened? You are blowing up that paragon that is formed through your mandrels, right? आप उसको simply air से blow कर रहे हो, air pressure जाएगा, then आप उसको blow कर दोगे, right? That is what blow molding is. Because we are blowing up a paragon, but इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या कर रहे हो, आप पॉलीमर को मेल्ट करके क्लोज मोल्ड के अंदर आप उसको इंजेक्ट करते हो, तो उसमें आप कितना भी डिजाइन बना लो, यू आर गोइंग टू सक्सेसफुली अचीव इट, बिकॉज आजकल अलग अलग टाइप से डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड आल्सो, रनर सिस्टम आल्सो, राइट? यू मस्ट बी नोइंग हॉट रनर का भी आता है, कोल्ड रनर भी आ रहा है आजकल, हॉट रनर कोल्ड रनर सिस्टम, राइट? देयर इज कोर पुल इन, कोर पुल आउट, ये भी बहुत सारे सिस्टम्स है, गेट पॉइंट कहाँ पे दोगे, इजेक्टर कहाँ पे आएगा, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में आपको वॉल थिकनेस कंट्रोल करना है, मतलब इट्स नॉट इजी, आई एम नॉट टेलिंग इजी, बट यू कैन डिजाइन सच प्रोडक्ट दैट यू कैन डू इट इन इंजेक्शन मोल्डिंग। बट ब्लो मोल्डिंग में एक सर्टेन लिमिटेशन आ जाता है, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन के ऊपर आप जा नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, but for blow molding, what is the So thickness minimum to maximum, any guideline? look, what is a injection molding? Have you seen आपका स्टील में, मेरे को पता नहीं, आप स्टील में भी कोई एक्सट्रूड कर इंजेक्ट करते रहोगे ना, कोई मोल्ड के अंदर स्टील का कोई ढांचा बनता है, ये बनता है, राइट? यू आर सीइंग इट। इंजेक्शन मोल्डिंग में सीधा क्या, आपका स्क्रू जो है ना, वो मेल्ट को पुश करता है, जो Yeah, कि that बहुत ही from ज्यादा hopper, लिक्विड, yeah, from hopper, that screw yeah, will screw be will descending, take yeah. the material and it will push through the to a mold, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एमएफआई जो यूज होता है ना इंजेक्शन मोल्डिंग के केस में, वो बहुत ज्यादा हाई एमएफआई है। 10 का एमएफआई यूज करते हैं, 12 15 16 ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट थिकनेस। जितना आपका पार्ट का थिकनेस कम होगा, आपको उतना हाई एमएफआई मटेरियल लगेगा। Right. तो ब्लो मोल्डिंग में वो प्रोविजन ही नहीं है, आपको हाई एमएफआई पे गए मतलब आपका पैरिजन सैग हो गया, गिर जाएगा नीचे, Okay. यू कैन नॉट ब्लो ए प्रोडक्ट। Got it. But there will be particular guideline, minimum this thickness to maximum this thickness. That I don't know whether the once why, because uh, there is no design, there is some many design limitation in blow molding, whereas in injection molding there is no design limitation. I agree. But thickness, in terms of thickness, let's suppose I want to make a blow molding part. So minimum, is there any guideline below this minimum thickness I can't go? This or You know that I need to check. I am not aware of this. why? But I Because don't think for that's some of the SMC, no, what I am just conveying you कि most of the critical thickness part or low thickness part is not done by blow molding. There is मतलब mostly जहाँ पे आप that I got it. We can't achieve the that thickness variation less accurate compared to injection molding. That is very clear. But minimum thickness, if you go below this, that you will get this issue. Like in SMC, I can't go below less than 2 point. It should be more than 2.5. SMC what means sheet metal composite No, or sheet what? molded composite, like that compression molding. Or sheet molding compound. No, Sheet what? molded composite, yeah. Compound or Sheet composite. okay. Oh, Like SMC you are taking polyester me. epoxy resin plus glass Okay, field. okay. Unsaturated polyester on the epoxy. Yeah. That you are telling. Yeah. Oh, yeah, that is a very different process as compared to blow molding. That is nothing to do with. That's what, just I will take an example because there is a guideline for thickness, right? For this. ना ब्लो मोल्डिंग प्रोडक्ट में मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो ब्लो मोल्डिंग में बन I गया have दूसरे। never seen too much blow molded part. Injection molding, I am confident, but आइदर इंजेक्शन मोल्डिंग होता है, नहीं तो एसएमसी और बीएमसी ऐसे यूज होता है, स्मॉल मोल्डिंग कंपाउंड एंड ब्लो but मोल्डिंग कंपाउंड। nowadays यू आर I इनटू observed many industries are going for you are into molded what? Tata also. Automotives. Now what you told me? Hello? Yeah. You are into which company? Yeah, Tata Motor, yeah. Tata Motors, which plant? Like I don't know. Pune. Okay. Hinjawadi. No, yeah, Pimpri. Yeah, my friend is one of my friend is also there in Tata Motors. Yeah.
So his name is Devashish Burman. So he's there. Okay, ji. So he's also in, I think he's in composite because he's also a plastic engineer. Okay. I don't know which division he is in, but I know, yeah, whether they are in, there is SMC division of Tata Motors, is composite division also. But I don't think that there is in any limitation given in blow molding, because most of the critical part are not defined in a blow molding process. So you are telling me that Why I'm telling you, because if you refer now, railways, no. So railway I seat don't have and buses seat all are now blow molded part. no. Yeah, got it. Even So that fuel tank also all are blow molded part. So definitely there will be some advantage why people are going. So I'm also figuring out. Yeah. which tank is you are telling me? Sorry. Which tank is blow molded part you are telling me? Fuel Sorry. tank. Fuel tank. Yeah, fluid tank is that is PP. You are tell what you tell me PP glass filled. What? That fuel I don't know that which material they are using. I'm not confident. So Yeah, but I need to I check need to over I need that. to check. Yeah. Right now I'm not up to date. Yeah, that's okay. Fine. So you what we are discussion is mostly about glass transition temperature, right? So I've defined you what is TG, right? Right. Everybody is clear what is TG now. Yeah, So clear. Yeah. Please go ahead. Yeah. yeah. So so this is a temperature where the polymer mostly below that polymer is brittle. So one of the example that you can take is polystyrene glass. जो पहले आता था तो वो देखो वो नीचे गिरा हुआ तो वो टूट जाता था थोड़ा सा, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन का टीजी जो है वो 100 डिग्री में Sir, 18 one minute. You told you'll be telling three things. One is glass crystallization. One is glassalization temperature. Crystallization yeah. melt temperature. You have only completed glass TG. That's what I'm saying. Just listen to me. That's what I'm saying. I have not completed with anything. Okay, understood. So don't interrupt me. Like, so I'm just not getting the flow, right? So one is a crystallization temperature and glass transition temperature and melting temperature. So glass transition temperature, everybody is clear, right? Is it clear to all? Yeah. Yeah, clear, Right? sir. Clear. Yes, sir. Yeah. So glass transition temperature, I told you that polyethylene पॉलीप्रोपिलीन का मैं एग्जांपल लिया जिसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नेगेटिव में, तो आप एक एग्जांपल लेगो अगर पॉलीस्टाइरिन का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका पॉजिटिव में, इट इज अबव 90, राइट? 90 के अराउंड रहता है, 90 के ऊपर, इसलिए पॉलीस्टाइरिन जब आप रूम टेम्परेचर पे पॉलीस्टाइरिन आपका गिरता है ना हाथ से, राइट, तो वो आपका ब्रेक होने का चांसेस है। ऐसा नहीं कि कैटास्ट्रोफिकली ब्रेक होगा, बट इट विल ब्रेक। आपने देखा रहेगा पहले पॉलीस्टाइरिन के से पहले लाइट भी लैंप भी आते थे, आगे का ग्लास भी पॉलीस्टाइरिन का आता था, वो गिरते ही टूट जाता था, राइट? हैव यू सीन पॉलीस्टाइरिन का मटेरियल? अब प्लेट्स आते थे पहले ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरिन के। Because the glass transition temperature is more, right? यस, उसका So ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 90 डिग्री पे, 90 minus डिग्री 90, minus 90. नो, Plus 90 more. डिग्री, इसलिए तो रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है। Okay. 90 degree. Okay, 90. Now you're getting my point. Why I'm saying the giving the like different example. पॉलीइथिलीन का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नेगेटिव में, इसलिए आपको रूम टेम्परेचर में गिरा दो तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन पॉलीस्टाइरिन का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव 90 डिग्री में। तो वो जब आप कोई हाउस होल्ड में आपका अगर पहले ग्लास रहेगा, ट्रे रहेगा पॉलीस्टाइरिन का, अगर गिर गया तो वो टूट जाता है, राइट? तो इसलिए What वो ही about ग्लास PP? ट्रांजिशन What about PP? PP का also I told you ना, -15 -20 Okay. डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स। रैंडम कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है तो -10 -15 रहता है। अगर कोपॉलीमर है तो फिर नीचे नीचे जाता रहेगा वो, रबर ऐड होते जाएगा तो टीजी विल शिफ्टेड डाउनवर्ड, लाइक -20 -25 ऐसे। अगर पॉलीइथिलीन का आप ले रहे हो तो एलडीपी का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो -120 है, राइट? अगर थोड़ा सा एचडीपी का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ले रहे हो दैट इज -80, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स टीजी शिफ्ट होता रहता है। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, we are getting a point. Yeah, one question. Like you told us the example of polystyrene.
So Yeah. practically, what is the use of polystyrene if like it is so much brittle because the TG is like 90 degrees? So what I told is practically where when you get an impact, it will crack. Right? It will not that you are putting it 90 डिग्री आपको ऐसे रूम टेम्परेचर में रख दिया तो वो क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दोगे तो देन वो रिजिड है, रिजिड मटेरियल को आप इम्पैक्ट दोगे, वो अगर उसका उस इम्पैक्ट फोर्स के ऊपर चला गया देन इट विल ऑब्वियसली इट विल क्रैक। उसका वेट अगर इसका इम्पैक्ट सहन नहीं कर पाया तो वो क्रैक हो जाएगा, राइट? नहीं कि ऐसे रूम टेम्परेचर में रख दिए तो वो क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। But the use will be very limited, right? पॉलीस्टाइरीन का बहुत यूज था। आपने पहले ग्लासेस देखे क्या, कांच जैसा दिखते थे? अभी तो वो Mm-hmm. पॉलीकार्बोनेट के आने लगे, पहले वो पॉलीस्टाइरीन के आते थे। ट्रे जो ग्लास जैसा लगते थे, वो दैट वाज ऑल आल्सो मेंट फॉर पॉलीस्टाइरीन। Due to its transparent properties, right? यस। अभी सम ऑफ द एप्लीकेशन उसको पीएमएम में उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पीएमएम में बेटर वेदरेबिलिटी मिलता है, इसलिए पॉलीमिथाइल मिथाइल क्लोराइड ज्यादा यूज होना चालू हो गया। मतलब ये ऑटोमोटिव में, ग्रेड में। और बहुत सारे में जहाँ पे आपको टफ मटेरियल चाहिए, लाइक उसका केस में आपको पॉलीकार्बोनेट यूज होना चालू हुआ है। टॉप और फ्लेक्सिबिलिटी में उसमें भी बहुत सारे अंतर है कि किस मटेरियल को आप टॉप बोलोगे, किसको आप फ्लेक्सिबल बोलोगे। जो ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा विदाउट एनी तो उसको टॉप मटेरियल बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट लिमिटेशन। तो आपको ये खाली पॉलीमर याद रखना है कि पॉलीस्टाइरीन है तो पॉलीस्टाइरीन इज मोस्ट ऑफ द ब्रिटल बिहेवियर है, तो उसको रूम टेम्परेचर में वो अगर उसको इम्पैक्ट दे तो वो टूट जाएगा, राइट? बट आप पॉलीइथिलीन पॉलीप्रोपिलीन नहीं टूटेगा। whereas PMMA is not susceptible, less susceptible as compared to polystyrene। इसलिए पॉलीस्टाइरीन के जगह कोई कोई एप्लीकेशन में PMA रिप्लेस कर दिया। whereas पॉलीकार्बोनेट जो भी पॉलीस्टाइरीन के चीजें थे वो भी ऑल्सो टॉप मटेरियल है, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए पॉलीस्टाइरीन के बहुत जगह पे से पॉलीकार्बोनेट से भी रिप्लेस हो रहा है। आजकल जो ग्लास आता है ना पॉलीकार्बोनेट का आता है। So in a nutshell, we can say that to keep the part in that plasticity, Yeah. to avoid brittleness, it should be in TG range, right? Yes, it Okay, should be workable TG range, workable not in TG. a TG range, it should be workable TG range। Okay, okay. If it cross, मैंने if it, आपको व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि टीजी के ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉलीमर टीजी के ऊपर तुरंत नीचे चला गया तो तुरंत ब्रिटल हो जाएगा, नहीं। वो टीजी के कुछ लिमिट रहेगा उतना टेम्परेचर के नीचे, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑल्सो। yeah, got it. Range. There will be range. रेंज उसका स्ट्रक्चर भी देखो आप इसमें स्टाइरिन Mm, रिंग है, आप देख रहे हो ना, बल्कि रिंग्स है। आपको मैं केमिस्ट्री में, विदाउट केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो बल्कि रिंग्स रहता है ना वो हिंडर कर देता है आपका ना पॉलीमर को, बहुत ज्यादा स्टिफ कर देता है। बल्कि रिंग्स रहते हैं ना, ये जो बंजिन के रिंग, okay, क्योंकि okay. वो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, लाख्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है ऐसे, राइट? उसकी वजह से उसका हिंडरनेस बढ़ जाता है, वो ज्यादा रिजिड बिहेवियर करता है। जबकि पीएमए हो गया, पॉलीमिथाइल मिथाइल ऐसे बल्कि रिंग नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत इतना जल्दी हिंडर्ड नहीं होते लो टेम्परेचर में, Right, sir. एटीजी Right. के लो रेंज में। Mm. Sir, basically, you are sharing a lot of guideline, but generally we'll forget if any specific guideline you can thumb rules which you are telling will be good if you can in a PPT form. It will help us as a ready reckoner. थंब रूल मींस व्हाट टाइप ऑफ वन? Like you have told while discussing many guideline, you told this now या this guideline if you can get in PPT because what will happen already we listen right we forget it. If PPT is there we can refer in anytime we can recall that points for our reference. या या सो Because आई नीड what टू, you have shared, no one is telling this. I'm telling you too frankly. ना ना आई नो इट्स व्हेन आल्सो व्हेन Generally, आई, theory book is like if you go theory book, na will not understand what the guideline you told. Because ना the guideline which थ्योरी you बोल told, के the theory guideline, proof is yes, sorry. not at all related to any practical application। That's what the guideline which you're telling after experience you got it. If you put in a Yes, PPT that I form, have it will be worked helpful in for a all of wider. us. Really, we'll get benefit out of that. Yeah. Oh, okay, so I need to, because from tomorrow one of my colleague who is going to take you some of the part, because I have also worked now,
So when my class turn will come, so now I will share you some of the guidelines like Please, sir, because based on your experience, something okay. key point we can share. It will be very really helpful for all So of us. now you understood TG, right? Yeah, very Somewhat, clear. somewhat you have understood that TG. Yeah, Below which your polymer is very rigid, like right. below a certain range your polymer started behaving rigid, and above which your polymer started behaving somewhat flexible, right? But एक टेम्परेचर रेंज है, ऐसा नहीं कि तुरंत रिजिड हो जाएगा तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाएगा। टीजी से 20 30 डिग्री नीचे बहुत ज्यादा रिजिड होगा, ऐसे 20 30 40 डिग्री के ऊपर फ्लेक्सिबल होगा, ऐसे पकड़ के चलो, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, मटेरियल का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। अगर पॉलीस्टाइरीन है उसका थोड़ा अलग बिहेवियर रहेगा, राइट? अगर उसका आपका पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, अलग रहेगा। पॉलीमिथाइल मिथाइक्रिलेट है, उसका बिहेवियर अलग रहेगा। समझ रहे ना आप? हेलो? Yeah, we are getting. So depending upon the polymer structure also it will vary the temperature range. You getting my point? It is not always that for one polymer is range of 30 degree, but for other polymer it may be the range of 50 degree, right? Depending upon the polymers, right? So TG will, so TG value will the workable TG range that I'm mentioning about, right? Also in some polymer, what you required, in some polymer where you require very much stiffness, तो आपको उसमें TG रेंज पे जाना ही नहीं है, आप TG रेंज के नीचे भी यूज कर सकते हो, राइट? जैसे आप पॉलीएमाइड है, उसका पॉजिटिव में टीजी, आप पीएमए में है, उसका आप रूम टेम्परेचर में यूज कर रहे हो ना, क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज यू डोंट रिक्वायर दैट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट जहां पे आएगा तभी जाके आपका मेटल रिजिड होगा, तभी जाके आपका मेटल टूटेगा ना। अनलेस एंड अनटिल इट गेट इम्पैक्ट बाय समथिंग, तो आपका मेटल नहीं टूटने वाला है। तो उसके उस केस में आपको रिजिडिटी चाहिए। अगर टीजी के नीचे जाते हो तो पॉलीमर का रिजिडिटी बढ़ जाता है, दैट मींस फ्लेक्सुरल मॉडुलस इंक्रीजेस हो जाता है। समझ रहे ना? ये गेटिंग माय पॉइंट? लो टेम्परेचर में अगर टीजी के लोअर वैल्यू में गए तो आपको पॉलीमर का फ्लेक्सुरल मॉडुलस बढ़ जाएगा। ये गेटिंग माय पॉइंट? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बिकॉज आपका पॉलीमर रिजिड हो जाता है, राइट? लेकिन समवॉट में अगर आपको बैलेंस और प्रॉपर्टीज करना है तो आपको एक रेंज में यूज करना रहेगा। अगर तो आपको बैलेंस और प्रॉपर्टी नहीं करना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में खाली मॉडुलस चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसमें कोई ये नहीं है कि यू शुड यूज, बिकॉज एवरी पॉलीमर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मोस्ट ऑफ द दिस कंडेंसेशन पॉलीमर, उसका टीजी आपका उसका टीजी आपका हायर साइड में। मोस्ट ऑफ द पॉलिस्टर पॉलीएमाइड इस सब का टीजी अराउंड आपका पॉलिस्टर पॉलीएमाइड पॉलिस्टाइरीन, ये सब का टीजी हायर साइड में 70 80 90 ऐसे रेंज में। बट यू आर स्टिल यूजिंग इट इन a room temperature because you have to select the polymer according to your properties, right? Property requirement, right? Am I audible? Yeah. Please continue. Yeah, we are listening you. Yeah. तो बॉयस आप समझे ना कि पॉलीमर को आपको ऐसा 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 नहीं कि टीजी रेंज के नीचे है तो आप नहीं यूज करेंगे, बट ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। देयर इज नो सच थंब रूल। टीजी के नीचे ही सब पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर यूज होते हैं। आप रूम टेम्परेचर तो 25 26 30 पकड़ लो, या ज्यादा से ज्यादा 40 पकड़ लो इंडिया में, अगर Right. तो यूज कर रहे हैं ना हम पॉलीमर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। बट Right. टीजी इज व्हाट इज समवhat डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। समझ रहे ना? एक पॉलीमर को डिफाइन कर रहे हो, आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हो, ऑल्सो सम ऑफ द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन भी जब डिफाइन करते हो तो उधर टीजी आता है। टीजी विल प्ले अ वाइटल रोल। बट Yeah, आप I want to share one that experience based on TG. One या component was there, and while injection molding, the input parameter they put wrong TG value, kind of. The part was that physical part was start breaking while in the या flow. इट स्टार्ट ब्रेकिंग। So यू हैव टू कीप while द when पॉलीमर अबव टीजी। they have done the AD analysis, they come to know, okay, this was the root cause also for that TG. Which analysis they have done? That AD analysis, AD. I don't know, mention designing software somewhat No, or no, not. no. Generally, AD analysis is that structured approach to find out the problem, why problem happen. That Okay, okay. it's like a RCA or I RCA. I I understand it is somewhat like statistical tool Yeah, for analyzing those. that is different thing. SPC is different thing. Okay. Generally, RCA and 5 analysis is a part of AD.
In any automotive, it's a AD, it's a restructured approach to find out the problem. If any issue is coming, why this issue happen is a structured approach, AD analysis. Yeah, yeah. I got it. Okay. So, okay, it's one type of analysis to find the Yeah, root right, cause right, of the problem. right, So right. basically, can you tell us like what exactly they did the FTIR or any DSC analysis? How they come to know that this TG was mentioned Yeah, wrong? matlab, you are asking to me or asking to him? No, no, I am asking Aslam. Yeah, Yeah, tell me, can you repeat your question, please? So basically, what exactly we want to know, if you yeah, are yeah. aware that what exactly chemical test supplier done, like FTIR or any DSC testing, to how they come to know that TG was the culprit here. That's what That I because think they have done. I think they have that they should have done the DSC. नहीं, that's what DSC से as TG part आता है. of a Yeah, AD definitely. part of a AD analysis. Under RCA, we have found out what are the possible cause of that problem that might then Occur. can occur. Right. So the all RCA, maybe few will be valid, few will be not valid. So they have done the design of experiment and also check with the supplier. Now, if you are checking with the supplier, we validate all input parameter. Then the TG was the one of the point. And further, if I talk about how they did it, so I'm not related to out of scope, so Okay. also not interested to go in that depth. I can say Yeah, it's mostly if you want to find because some quality person taken care of that point. So yeah, that's yeah. So yeah, if your material is failing, that means if it is failing due to some of the thermal parameters, so you have to go for DSC because DSC is the best tool to find out the TG of a polymer, right? So it is nothing but a differential scanning calorimetry. So you need to right. find out the calorific value and transition value. So in that TG, there are 3 points that I am explaining now. You have TG, TM, and crystallization temperature. These 3 points will come in DSC. So this is a tool to find out the different thermal transition of polymer. Can you tell the full form of DS? DSC, differential scanning calorimetry. Got it? Or Differential I have scale. to differential scanning calorimetry. Calorimetry. Calorimetric. Okay. Calorimetry. Okay. So if you can search for DSC test for polymer, you will get the full form of DSC. No issue. Okay. So that is TG is over. And once you have got some of the uh, some of the properties related to related to the TG, right? So why it is happening? Why that your part breaks? Because when you kept that material above this TG, ना, so it is a rapid crystallization. Injection molding में आप hardly 30 second कितने second देते हो cooling time? What will the cooling time? Yeah, 30 second or 60 second kind of, yeah. या सो आप उसमें कोई भी हॉट ऑयल ये करते होगे ना, सर्कुलेट करते रहेंगे. Yeah, oil cooling, yeah. या ऑयल कूलिंग मींस मतलब -80 -90 में रखने के लिए हॉट ऑयल ही तो सर्कुलेट करते रहोगे मोल्ड में. तो इफ इट इज लो देन आपका क्या होता है, टीजी के नीडल तुरंत आप पॉलीमर को क्वेंच कर रहे हो, तो आपको ना वो बेटर क्रिस्टलिटी अचीव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना क्या होता है, एक आई डोंट नो, एक टर्म से आप उसको पता है कि नहीं, कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन है सब टर्म में पॉलीमर. तो ड्यू टू दैट पॉलीमर बिकम मोर रिजिड, उसका वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट अचीव नहीं होता है, जब तक मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है उसका अचीव होने के लिए. अगर उसको थोड़ा सा ऊपर रखोगे देन वो ऊपर ठंडा होकर फिर आप जब रूम टेम्परेचर में रहोगे ना, देन वो इजीली धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा. लेकिन आप उसको सडन क्वेंच कर दे रहे हो ना मोल्ड के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज ब्रेकिंग. So okay, तो You means want to say cold molding? हाँ ना, कोल्ड मोल्डिंग नहीं, पॉलीमर एबी. ओके, पॉलीमर आप अगर हीट करके मेल्ट करके अंदर डाल रहे हो कोई भी मोल्ड के अंदर, राइट, मोल्ड का टेम्परेचर कुछ भी पकड़ लो, XYZ 70 80 90 जो भी ये रहेगा, या रूम टेम्परेचर में आप मोल्ड कर रहे हो, राइट. सब पॉलीमर का डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन रेट रहता है.
जब पॉलीमर ठंडा होता है ना, तो डिफरेंट रेट में ठंडा होता है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। जैसे पीपीपी क्या है, वो जल्दी ठंडा हो जाते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे भी मोल्ड करो तो उसको कोई जरूरत नहीं है मोल्ड हीटिंग कूलिंग देना, उसको 30 डिग्री टेम्परेचर चलता है जो रूम टेम्परेचर रहता है। राइट, अगर नायलॉन का मोल्ड करो तो उसको एबव टीजी रखना पड़ता है। अगर पॉलीथिलीन टेरिप्थाइलेट को भी मोल्डिंग करो तो उसको एबव द टीजी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके टीजी के नीचे रख दिए तो वो सडन आप क्या कर रहे हो, -250 से आप सडन ड्रॉप कर रहे हो टेम्परेचर। राइट, मतलब 80-90 में ला रहे हो, तो उतना टाइम भी नहीं दे रहे हो उसको कूल होने के लिए मोल्ड के अंदर। राइट, और सडन उसको कम टेम्परेचर में कूल कर रहे हो, तो उसके ऊपर कैसा रहता है, कूलिंग का स्टेप रहता है ना। थर्मल थोड़ा सा कूल होगा, देन इट विल समवॉट रिलैक्स, देन फर्दर आप कूल होगा। लेकिन आप कम कूलिंग टाइम दे रहे हो और उसके अंदर आप तुरंत टीजी के नीचे ले रहे हो ना, तो जब इजेक्टर आपका मारता है ना, तो वो क्या होता है, वो रिजिड हो जाता है स्ट्रक्चर, मतलब तुरंत कूल होने की वजह से ना प्रॉपर क्रिस्टलिनिटी अटेंड नहीं होता मटेरियल में। तो जहां पे आपको डिफेक्ट होता है ना, क्योंकि प्रॉपर बना ही नहीं ना, क्रिस्टलाइज नहीं हुआ ना, जिस जगह पे डिफेक्ट होगा उस जगह से टूट जाएगा। क्योंकि इजेक्टर जब इंजेक्शन मोल्डिंग में ना इजेक्टर इजेक्ट करता है ना उसको, तो इजेक्टर मार्क से भी प्रोडक्ट टूटते हैं प्रॉपर कूलिंग कूलिंग की वजह से, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से। I got it. We need sufficient time to give to part to Cool also, give you proper need a crystalline. temperature above which you want to cool the polymer. So, so basically, we need to make the bolt temperature as per the TG of the material. Yeah, some of the material, TG of the some of the materials। अभी मैं आपको क्या, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स, आपको अगर पॉलीप्रोपिलीन पॉलीइथिलीन का मोल्डिंग कर रहे हो तो उसका रूम टेम्परेचर पे ही मोल्डिंग करते हैं लोग मोस्टली। कूल का उसको तो सीधा वाटर कूलिंग करते हैं 30 डिग्री 25 डिग्री, क्योंकि उसका टीजी का इफेक्ट कुछ नहीं है उसके ऊपर। उस पॉलीमर के ऊपर ज्यादातर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो टीजी के ऊपर है, बहुत ऊपर है। राइट, लेकिन सब जो इंजीनियरिंग पॉलीमर है ना, जिसमें ऐसे बेंजीन रिंग है, पेंडेंट रिंग है, जैसे पॉलीस्टर हो गया, पेट का कैसे हो, पेट को आप इंजेक्शन मोल्डिंग करो तो आपको उसका मोल्ड का टेम्परेचर 120-130 के ऊपर रखना पड़ता है, कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर उसका, तो अभी जाकर वो क्रिस्टलाइज होगा और टूटेगा नहीं आपका पेट। मोल्ड का टेम्परेचर आपको उतना रखना पड़ता है, क्योंकि पेट को तो, क्योंकि आपका जो डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी, जो आपका मेल्ट का टेम्परेचर और ये टेम्परेचर अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो सडन कूलिंग होगा, जिसकी वजह से क्रिस्टल इम्परफेक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका जब भी इजेक्टर आप मारोगे ना, जहाँ जिस जगह पे डिफेक्ट रहेगा ना कूलिंग का, मतलब उधर मेटेरियल के अंदर डिफेक्ट बिल्डअप होगा, उस जगह से टूट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? Yes, thank you. राइट, कि उस हिसाब से वो सब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग गाइडलाइन रहता है कि मोल्ड टेम्परेचर कितना रखना है, कूलिंग टाइम कितना देना है। आप डीडीएस में मटेरियल पे कोई सप्लाई रहेगा ना, वो सब देता है। दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। आप अगर कोई चला रहे हो ना मटेरियल, दे विल प्रोवाइड यू, आप कितना में उसको ड्राई करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना टाइम रखना है। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट सेम टीडीएस, यू विल नॉट यू कैन मिनिमाइज योर डिफेक्ट्स व्हाइल मोल्डिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो, देन यू विल गेट ए मोर अमाउंट ऑफ रिजेक्शंस। राइट, ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, Okay. So what is TM? What is melting temperature, that I will tell you. Melting temperature is nothing but the temperature ever which polymer started to melt, right? Or in the range of temperature like below 5 degree or -50, it is a range of temperature. If your melting temperature is coming around 170, that means your polymer is started melting from 160, 161. Like slow melting process has been, the melting process has been started, right? So there is always a difference between melting temperature and processing temperature, right? Have you, in case of polypropylene, polyethylenes, yeah, polystyrenes, right? When the melting temperature is around 150, 170, right? But polypropylene melting temperature, while we are doing injection molding and all, we are doing at 220, 230, right? So there is always a, why it is so? Because melting temperature is that temperature when polymer melting transition happen, मतलब जो polymer में जो crystallites रहेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था, पॉलीमर इज वन इज amorphous region एंड क्रिस्टलाइन रीजन, राइट? अभी जो
अमोर्फस रीजन होंगे वो तो एनर्जी नहीं लगता है उसको मेल्ट करने के लिए, लेकिन जो क्रिस्टलाइन रीजन रहते हैं उसको एनर्जी लगता है मेल्ट करने के लिए। तो जब क्रिस्टलाइन रीजन ब्रेक होते हैं तो उस केस में आपको मेल्टिंग टेम्परेचर मिलता है, राइट। तो मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पॉलीमर मेल्टिंग टेम्परेचर वेरी करता है, अलग अलग पॉलीमर का अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एज सॉरी different polymer has different melting temperature, right? Yeah, right. तो मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर ही आपको पॉलीमर को प्रोसेस करना रहता है। अगर आपका मेल्टिंग सपोज, बट इट डिपेंड्स, अगर पॉलीमर टू पॉलीमर, अगर पॉलीप्रोपिलीन का है तो 170 175 मेल्टिंग टेम्परेचर है, तो आपको पॉलीप्रोपिलीन को 220 में प्रोसेस करना है। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर में उसका विस्कोसिटी एडिक्वेट विस्कोसिटी में आ जाता है। इसलिए पॉलीप्रोपिलीन का जब भी एमएफआई करते हैं ना 230 में करते हैं, क्योंकि वो डिफाइंड स्टैंडर्ड है। 230 में जितना विस्कोसिटी है उस विस्कोसिटी में ही उसका एमएफआई होना चाहिए। उस हिसाब से हमें उसका प्रोसेस सिलेक्शन करना पड़ता है, जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 175 के अराउंड है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? एक मेल्टिंग मतलब पॉलीमर मेल्टिंग प्रोसेस चालू हुआ, उस प्रोसेस में पॉलीमर का क्रिस्टल्स मेल्ट हो गए, लेकिन उसका विस्कोसिटी अचीव नहीं हुआ। उसका विस्कोसिटी कब आएगा? जब और हायर टेम्परेचर में जाएंगे। बट सम ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर लाइक नाइलॉन, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, पॉलीब्यूटिलीन टेरिप्थलेट, ये जो सब पॉलीमर है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा हम 20 डिग्री 25 15 20 डिग्री ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन पॉलीइथिलीन पॉलीओलिफिन्स के केस में हम उससे 40-50 डिग्री ऊपर जाना पड़ता है उतना विस्कोसिटी अचीव करने के। बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पॉलीमर, राइट। क्योंकि ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो मतलब ज्यादा टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, लेकिन उसका और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना 20 अगर 15-20 डिग्री के ऊपर वो प्रोसेस होगा। अगर उससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग, थर्मल डिग्रेडेशन हो जाएगा, राइट। तो इसलिए उसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते। वायरस पॉलीइथिलीन पॉलीप्रोपिलीन पॉलीस्टाइरीन इस सबको 50-60 डिग्री एबव टेम्परेचर पे प्रोसेस कर सकते हो। गॉट इट? Sir, sorry to interrupt you. Yeah. May I know the melt temperature for PVC, polyvinyl chloride? Okay, that's a very nice question. Polyvinyl chloride does not have any melting temperature. Why is it so? Because it is an amorphous polymer, right? That I am going to teach you what is the difference between the polymer which are semi-crystalline, they only show the melting temperature. It may have a processing temperature 170, 180 processing Yeah, temperature, but it does not have a melting temperature. That's what I'm explaining. Every polymer does not have a melting temperature. The polymer that are semi-crystalline that only have a melting temperature. oh, okay. Because Sir, may I crystalline know the region, difference between may I know the difference between process temperature and melting temperature? so that's what I'm Is this same? explaining. Process temperature it means that is processing temperature, right? Okay. We are processing using a extruder and all. So that is the process temperature, because in that temperature your material is processable. You Okay. getting my point? You are Yeah, getting correct. that adequate viscosity that your material can be flow through any kind of dye, right? But melting temperature is what you are measuring the temperature when the polymer crystal started to break due to the application of thermal energy. All these temperature, glass transition temperature, melting temperature, crystallization temperature, these are these are research. So these are these value are determined by using machines like जैसे मैंने बोला ना डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री से ये सब निकालते हो कि मेल्टिंग टेम्परेचर इसका क्या है। जितना मेल्टिंग टेम्परेचर आता है डिपेंडिंग अपॉन योर पॉलीमर यू आर गोइंग टू सेट द प्रोसेसिंग टेम्परेचर, राइट। क्योंकि आप Okay. किसी का मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे प्रोसेस नहीं कर सकते, मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर ऊपर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप डीएससी में से मेल्टिंग टेम्परेचर निकालते हो उसके डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमर। जैसे मैंने बोला पॉलीओलिफिन्स मतलब उसमें पॉलीइथिलीन पॉलीप्रोपिलीन आ गए, पॉलीस्टाइरीन उस समय क्या 50-60 डिग्री 70 डिग्री आपको ऊपर चला हुआ है तो चलेगा, कोई इशू नहीं, बिकॉज यू विल गेट ए गुड विस्कोसिटी एट दैट रेंज सो दैट योर मटेरियल इज गोइंग टू प्रोसेस वेरी वेल, राइट। जैसे पॉलीप्रोपिलीन का 175 180 बोला तो 230 तक हम पॉलीप्रोपिलीन प्रोसेस करते हैं, बिकॉज व्हाट व्हाई इज इट सो? बिकॉज स्टैंडर्ड डिफाइंस एसटीएम स्टैंडर्ड डिफाइंस कि polypropylene has a good amount of viscosity to flow at the temperature of 230. It is a standard processing temperature, but we can do by 210 to 20 also. Depends upon the processes also, right? It is nothing to do with your melting temperature.
you need to check out whether your process require that amount of viscosity and that temperature you need to set. But we can go up to 50-60 degree above that melting temperature in the case of polyolefins. But in polyesters, what I told you, that in polyesters you cannot go beyond 20-30 degree higher. If your melting temperature is coming to 30, you can only process your polymer by 225. So 255, 260, 250 in that range. और अगर उसके ऊपर 270 280 तक आप चले गए, दैट मीन्स आपका पॉलीमर धीरे धीरे डिग्रेड होना चालू हो जाएगा. पॉलीमर डिग्रेड होने मतलब का ये होता है कि पॉलीमर का चेन थर्मली ब्रेक डाउन हो रहा है. अगर पॉलीमर का चेन थर्मली ब्रेक डाउन होगा तो आपका मोर अमाउंट ऑफ जो आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टी आप अचीव करना चाहते हैं मिक्स करने के बाद, वो प्रॉपर्टी आपका नहीं आएगा. यू विल नॉट गेट गुड प्रॉपर्टीज, राइट? योर प्रॉपर्टी विल डिटोरेट. नाउ यू आर गेटिंग मी? Yes, I got it. Right. One more doubt, sir. If we keep it for more time, like residing time is more, na, then also Residence time. Residence time of polymer. Yes. Is that also having the same effect of? Yes. अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी सम पॉलीमर प्रोसेस कर रहे हो ना, उस टेम्परेचर में अगर रेसिडेंस टाइम आपका ज्यादा है, ऑल्सो यू विल गेट ए थर्मल डिग्रेडेशन. ऑल्सो अगर आपका कोई कोई पॉलीमर शियर सेंसिटिव होता है, जैसे नाइलॉन पॉलीएमाइड शियर सेंसिटिव पॉलीमर है, अगर आपको ज्यादा शियर दिए मतलब स्क्रू का आरपीएम ज्यादा बढ़ा रहे हो, दैट विल आल्सो डिग्रेड द पॉलीमर चेन. शेयर सेंसिटिव ये सब भी मिल जाएगा ना सर? कोई कोई शियर सेंसिटिव रहता है, कोई कोई टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है. डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर गोइंग टू choose your process. Process is the same, that depending upon that you are going to choose the parameters to process that polymer. राइट? आप एक्सट्रूडर में कर रहे हो तो आपको वो टेम्परेचर रेंज उतना रखना है, आपको शियर उतना हाई नहीं देना कि वो शियर से टूट जाए. क्योंकि आपको जो फिर कैसा है, आपको जो प्रॉपर्टी अचीव करना रहता है फिर वो प्रॉपर्टी मिलता नहीं, राइट? Okay. At last what you want to achieve is your properties, material properties, right? You will not get that such properties. Okay. Okay. And Now you understood what is TG and TM, right? So all the TG and TM of polymers, it depend upon its thermal transitions while you are heating the polymer, right? जब DSC में, in DSC there are two cycles जो आप मेजर करते हो ना, जैसे TG TM, उसमें दो साइकिल रहते हैं. एक रहता है हीटिंग साइकिल, एक रहता है कूलिंग साइकिल. आप 200 तक हीट कर रहे हो तो फिर 200 से वापस उसको कूल करना पड़ेगा, राइट? While heating you will see the TG, that is glass transition temperature, or TM, that is melting temperature. But while you are cooling it, when you are cooling the material, you will get a crystallization temperature, right? If your material has shows a melting temperature, that material may show or may not show the crystallization temperature depending upon your cooling rate. आप DSC में अगर कर रहे हो ना, तो आपका कूलिंग रेट के हिसाब से वो क्रिस्टलाइजेशन दिखा सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, राइट? बट क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच पॉलीमर के अंदर जो न्यूक्ली है ना, मोस्ट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना चालू हो गए, लाइक क्रिस्टल पॉइंट फॉर्मेशन होना चालू हो गए. दैट मीन्स उस टेम्परेचर में हाईएस्ट क्रिस्टलाइजेशन रेट है आपका पॉलीमर का, समझ रहे? मोर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हुए उस टेम्परेचर, दैट इज नॉट ए क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. गॉट इट? सॉरी, Yeah, okay, sir. you're getting what is crystallization temperature. In DSC there are two cycle. One is heating cycle जिसमें आपको TG और TM मिलता है. Cooling cycle में you may get a crystallization temperature, may not get a crystallization temperature depending upon your material behavior. अगर मिल रहा है तो आपको उसका एंथैल्पी कैलकुलेट करना, मतलब उसका कितना वैल्यू है, कौन सा टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन दिखा रहा है. जो वैल्यू में आपका क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर दिखाएगा, दैट मींस दैट इज द हाईएस्ट, दैट इज द टेम्परेचर एट व्हिच मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैज बीन फॉर्म्ड, राइट? दैट मीन्स उस चीज टेम्परेचर जिसमें मटेरियल का क्रिस्टलाइजेशन रेट सबसे ज्यादा है, राइट? दैट इज द पीक टेम्परेचर. गॉट इट? समझ में है? आपका मटेरियल का क्रिस्टलिनिटी उस टेम्परेचर में ज्यादा है सबसे, मतलब उस टेम्परेचर में ज्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन होना चालू हो गए, उसके बाद फिर से वापस मटेरियल ठंडा हो जाएगा, मतलब उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा, राइट? मतलब उस टेम्परेचर तक पॉलीमर इस आप बोल सकते हो, अगर उस टेम्परेचर तक हीटिंग साइकिल में आप गए भी ना, तो आपको क्रिस्टल कोई डिसरप्ट नहीं होगा, क्रिस्टल्स. समझ तो रहे? कि ये अगर इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग हीट कर रहे हैं और मेल्ट होने के बाद ये सॉरी फीड कूल हो होकर रहा है,
कूल हो रहा है, कूलिंग साइकिल हाँ में अगर गेट फ्रीज के बाद ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है करके समझना है, या कंप्लीट no कूलिंग, no 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 या no it's nothing. Why I'm saying is देखो, all this temperature has been made, has been analyzed through differential scaling calorimeter. I told you, right? DSC. This heat temperature has been analyzed through DSC, and DSC will give you the data. जिस डाटा को लेकर आपको एनालिसिस करना है कि मेरा प्रोसेस में कैसे बिहेव करेगा मटेरियल. नाउ यू क्लियर, नाउ वी आर गेटिंग ना, राइट? ओके The DSC is an analytical tool to find out these three temperature. Now you got it. So while when you got three temperature, you're depending upon the material characteristic, whether you are getting TG, you are not getting TM and TC. So most of the amorphous polymer, they do not show any kind of melting temperature or crystallization temperature. They only show TG, glass transition temperature. इसलिए पॉलीमिथाइल मिथाइलेट, राइट, जो आपका पॉलीकार्बोनेट, एबीएस, एक्रिलोब्यूटेन, स्टाइरिन, ये सब जो है ना, ये ओनली आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दिखाते हैं, क्योंकि ये पूरा अमोर्फोस पॉलीमर है, राइट? तो अमोर्फोस पॉलीमर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर उस पॉलीमर का रहता है जिस पॉलीमर में क्रिस्टल्स रहते हैं, उसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर रहेगा, लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर आपको डीएससी में मिलेगा नहीं, राइट? गॉट इट? ओके सर, यस। कोई भी अमोर्फोस पॉलीमर का आपका क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ओनली टीजी मिलेगा। लेकिन सेम पॉलीमर सेमी क्रिस्टलाइन है, तो पॉलीमर में अमोर्फस पार्ट भी है और क्रिस्टलाइन, मतलब सम ऑफ द पॉलीमर आर सेमी क्रिस्टलाइन, लाइक पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, तो उसमें सम पार्ट आर अमोर्फस एंड सम पार्ट आर क्रिस्टलाइन, राइट? सो इन दैट केस वो क्या दिखाएंगे, आपका बोथ टीजी भी दिखाएंगे और टीएम भी दिखाएंगे, और सम ऑफ द पॉलीमर आल्सो शो टीएम प्लस टीसी आल्सो, राइट? नाउ यू क्लियर? What is this HM? That is delta enthalpy value. Okay, okay. So the area under that TM ना, TM का ऐसे पीक आएगा ना, उसका एरिया जो कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज नोन एज डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी वैल्यू, हाउ मच हीट इट रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट क्रिस्टल्स। जो पॉलीमर में जो क्रिस्टल जितना ज्यादा हीट है, उतना मतलब जितना डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा है, उसका उसका आपका मतलब आपका पॉलीमर में क्रिस्टलिटी उतना ज्यादा है, Got it. राइट? That's what नाउ यू आर क्लियर? here for TM, not mentioned for ABS, PC, PS, PVC. हाँ, इट इज नॉट मेंशन Because फॉर this is because this is amorphous, right? यस। Okay, great. Thank you. टीएम और टीएम नहीं आता और इसका टीसी भी नहीं आएगा। अगर कोई मटेरियल में टीएम आ रहा है, ये नहीं कि उसका टीसी, मतलब टीएम आ रहा है तो टीसी आना चाहिए, कम टीसी ज्यादा टीसी आ सकता है, लेकिन अगर टीएम नहीं आ रहा है, दैट मींस मटेरियल में बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आएगा ही नहीं, Okay, if there is a no TM, then no TC. नो टीसी, बिकॉज उसमें क्रिस्टल्स है ही नहीं जो ब्रेक हुए, जो कि रिफॉर्म होंगे वापस कूल पे, Yeah, कूलिंग yeah. साइकिल में। Because crystallization depending upon melting. If no melting, then no crystallization, no point. हाँ, अगर मेल्टिंग कब आएगा मैं आपको बताया, जब क्रिस्टल ब्रेक होंगे तो भी मेल्ट ट्रांजिशन दिखाएगा, Right, राइट? right, right. अगर क्रिस्टल है ही नहीं तो मेल्ट नहीं होंगे, तो फिर वो क्या क्रिस्टलाइज होगा? आपके पॉलीमर में कुछ क्रिस्टलाइज होगा ही नहीं, Right. वेरी लेस, मतलब आप ऑलमोस्ट 5-10% क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि डीएससी में आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि Right, आपको वापस फिर आपको अदर देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक एक्सआरडी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, right, right. जिससे आप क्रिस्टल डिटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि Sir, one suggestion or maybe one request. Is there any quiz questionnaire daily basis? Because व्हिच क्वेश्चन? like today you have covered a lot of points, right? If Yeah. we can get a questionnaire, right? So again, if we give the questionnaires, that it will give a very good input to us also. Yes, yes. Like So that, multiple choice question, daily basis kind of. yeah. So I need to contact 2 years, because look. So why I'm not. Why I'm telling Uh, you, because and the I got your very point. I direct got point your you point. mentioned, right? But whether we catch that point or not. So when Yeah, we yeah, go the quiz now, it will ask us to rethink, and when we'll yeah. rethink, we will get to You we'll will get meet to with know. you. Yeah,
Yeah. Yeah, you got to Because know. if And you you got refer BITS planning, that course, they have a lot of quizzes. quiz. Yeah, lot of quizzes, daily basis kind of or weekly basis assignment. So which kind of quiz course you are taking in base planning? Like, I don't know. Not course, actually, if you done any BITS planning course, work integrated program. So in the part of assignment, there are a lot of quizzes. For quizzes also there is a number score you are getting, and the quizzes like make like that. For resolving the quiz, you have to study. Yeah. So yeah, that's what it is a very interactive course kind of engagement kind of. Yeah, I got it. We request that if you can implement for this also kind of, Yeah. so it will be helpful. Yeah. So now you understand what is TG, TM, and TC, Yeah. right? TC only a little bit confused. The both T rates are understood. Yeah. What is the joules per gram? The TC, but what happens actually? Joules per grams means what actually happening in that? There is an Yeah. energy. So what happened? Yeah, that is an energy. That energy has been consumed by the material while it melts. Energy, it's like heat energy getting consumed, huh? Yeah, heat energy is consumed. That's why TM and TG they both are come in a heating cycle of DSC. जब DSC में दो साइकिल रहता है, पहला साइकिल हीटिंग का रहता है, फिर कूलिंग करते हो उसको। सेम मतलब मेटल उसके अंदर ही रहता है, पहले हीट 200 तक देते हो, फिर दो मिनट उसमें रुकते हो 200 में, देन यू आर कूलिंग एट ए सर्टेन रेट 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 20 डिग्री, 5 डिग्री। तो कूल जब करते हो ना, तो मटेरियल क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसलिए पहले जब हीटिंग करते हो उस साइकिल में आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलता है और मेल्टिंग टेम्परेचर मिलता है, राइट। जब उसको कूल करते हो उससे क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमर। अगर अमोर्फस पॉलीमर आया तो आपको टीजी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो आपको टीएम मिलेगा, ऑल्सो टीसी भी मिलेगा, राइट। In the case of PP, if you see, melting temperature is 160 to 180 लिखा है इधर, but 160 to 165 165, but this one it shows 207 to 209. So what is the logic? This is 207 to 209 is no, it is the delta H value, enthalpy. This amount of energy is consumed per gram to melt the polymer. Okay. So heat energy required is तो TM का जो आपका पीक आएगा ना, it is Okay. nothing but the delta HM is the area under the curve that आपको मैं DSC का अगले जो मैं 2-4 दिन पर ऑल अगले हफ्ते जो लूंगा ना क्लास, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कहाँ से मेजर होता है, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक आइडिया आपको समझ जाएगा तो। ओके, आपने जो पहले बताया था कि डेल्टा एचएम टीसी जो है वो कूलिंग डीसीएम नहीं सुनो, देयर आर टू टाइप ऑफ डेल्टा एच। एक आपका हीटिंग के टाइम डेल्टा एच जो आएगा वो क्या करता है कि हीट एनर्जी कंज्यूम करता है, एंथैल्पी मतलब हीट कंज्यूम करेगा तभी तो मेल्ट होगा वो मटेरियल, राइट। ओके। लेकिन अब वो हीटिंग साइकिल खत्म हो गया, सपोज 200 तक मैंने हीटिंग दिया था पॉलीमर को, तो 200 से फिर मेरे को वापस कूल करना है उसको 30 तक रूम टेम्परेचर तक, या नेगेटिव में अगर टीजी देखना है तो नेगेटिव -50 तक कूल करना है, ठीक है। जो कि मशीन में प्रोविजन रहता है, ऐसा वो मशीन है उसमें कूलर रहता है, इंट्रा कूलर, वो -180 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको -50 तक कूल किया, अभी कूलिंग साइकिल में जिस पॉइंट पे मेरा क्रिस्टलाइजेशन आएगा, मतलब 120 के अराउंड आता है, 120-125 के अराउंड क्रिस्टलाइजेशन आता है, राइट, आपका पीपी का। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, जो टेम्परेचर आएगा दैट इज द मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑल्सो उसका भी एक डेल्टा एच वैल्यू आएगा, क्या आएगा कि वो क्रिस्टल जब बन रहे हैं तो क्या होगा, जब मेल्ट होते हैं तो हीट गेन होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हीट लॉस होता है, राइट। इसलिए वो क्रिस्टलाइज तो इसलिए अगर किसी को पता रहेगा तो मेल्टिंग इज ए एंडोथर्मिक ट्रांजिशन, while इज ए क्रिस्टलाइजेशन इज ए एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन, कि उसमें हीट लॉस हो रहा है, उधर भी डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, बट दैट इज इन नेगेटिव, दैट मींस उधर हीट लॉस हो रहा है। ओके, दैट ओनली यू कैन कैलकुलेट एरिया अंडर दैट कर्व, उस टेम्परेचर रेंज में एरिया लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। बट आपने डीएससी में कूलिंग करेंगे तो ये आ जाएगा बोला ना, तो फर्स्ट वी हैव टू हीट द मटेरियल, देन इट विल ट्राई टू कूल
to the room temperature and it will give the value in DSC. Yeah. Yes. Room temperature, yeah, -50, -100, whatever you want to keep. Okay, up to the temperature it will reduce and अगर आपको टीजी देखना है किसका -100 है तो आपको -110 तक जाना पड़ेगा ना उसे टीजी देखने के लिए। okay. So first heating will be 100 to 110 degree. It will heat. Then from there it will go to TG temperature. The energy lost will be the delta HM. Look, while you are heating the polymer, right, you are getting a sorry, so why I am saying while you are heating a polymer, that means आपको फिर क्या करना पड़ेगा? First you have to keep a cycle, right? What cycle? TG is coming in a heat gain cycle, right? I told जब पॉलीमर की हीट करते हैं तब टीजी आता है। तो अगर -100 आपका टीजी है तो पहले आपको आपका स्टैंडर्ड जो भी मशीन रहेगा उसका फर्नेस आपका रूम टेम्परेचर में रहेगा, राइट? और रूम टेम्परेचर में मशीन है तो Okay. तो रूम टेम्परेचर में आपको -120 तक लेना पड़ेगा। उधर से जब आप -120 से आप हीट करना चालू करोगे ना तो Okay. आपको -100 डिग्री में टीजी दिखाएगा अगर एलडीपी का केस कर रहे हो। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे फिर जब पॉजिटिव 100 110 आएगा तभी आपको टीएम दिखाएगा, Okay. राइट? फिर 110 में टीएम दिखाया तो आपको ऐसा नहीं कि 110 में टीएम दिखाया तो आपको एक रेंज पहले से ही सेट करते हो। ऐसा नहीं कि आप मशीन के अंदर ऐसे तुरंत सेट करना पड़ता है। तो आपने सपोज सेट किया है -120 टू 150 और Okay. फर्दर आपने क्या किया 150 टू ऐसे एक्चुअली सेट करना पड़ेगा आपको कि आपका मटेरियल डिग्रेड ना हो, क्योंकि पॉलीथिलीन हमको पता है 190 तक चलता है तो हम 150 सेफर साइड रखते हैं, 140 सेफर साइड 150 रखते हैं, राइट? डीएससी में तो 150 में वापस से उसको 150 से कूल करोगे। Okay. अब आपको कूल करना पड़ेगा ना, तो जब हीटिंग साइकिल होता है तो आपको टीजी और टीएम हीटिंग साइकिल में मिल गया। इसका कैसे टीजी नेगेटिव में है करके आपको लग रहा है कि अरे माइनस पे जाके कैसे हीट कर रहे हो, दैट मीन्स वो हीटिंग साइकिल में ही है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव में है इसलिए आपको लग रहा है। जिसका टीजी पॉजिटिव में है वो तो हीटिंग साइकिल तो आपको हीट ही करना पड़ेगा ना, रूम टेम्परेचर से आगे और फिर से वापस रूम टेम्परेचर, राइट? Okay. राइट। तो टीजी और टीएम जो है वो आपका हीटिंग साइकिल में आएगा जब हीट करोगे। देन व्हेन यू फर्दर कूल इट डाउन आपको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आएगा, दैट इज नोन एज टीसी। Okay. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Okay, sir. Okay. तो उसमें मेल्टिंग के टाइम अलग डेल्टा एच आता है जो कि डेल्टा एच एम बोलते हैं, बिकॉज इट इज द एंथैल्पी वैल्यू व्हाइल मेल्टिंग, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड एज डेल्टा एच एम। फिर जो उस टाइम पे जो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे जो डेल्टा एच वैल्यू आएगा दैट इज डेल्टा एच सी, दैट इज एंथैल्पी व्हाइल डू दैट इज द एंथैल्पी लूज, मतलब पॉलीमर जो क्रिस्टल बनेगा तब हीट लॉस करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव माइनस डेल्टा एच सी, that mean which are enthalpy and the crystallization loss while crystallization process जो crystallization temperature आएगा ठंडा करने का, समझे आप? Okay. प्लस साइड में HM आएगा, माइनस साइड में HC आएगा। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन डेल्टा एच सी आएगा, लेकिन आपको इतना डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं एंथैल्पी वैल्यू दिया था कि डाल दिया आपको। मतलब ये याद रखना कि टीजी और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हो, नो इशू। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डेल्टा एच एम वैल्यू जो है एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग वो पॉजिटिव में आता है जब हीटिंग साइकिल में आता है, और एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज माइनस डेल्टा एच सी बोलते हैं उसको, क्योंकि कूलिंग साइकिल में है ना तो क्रिस्टलाइजेशन होगा तो हीट लॉस होगा, तो हीट लॉस के टाइम इसलिए उसको नेगेटिव में बोलते हैं। तो डेल्टा एच सी क्योंकि ठंडा करने के टाइम वो क्रिस्टलाइज हो रहा है ना, आप ठंडा कर रहे हो ना, आप उधर हीट नहीं कर रहे हो ना उसको, वापस 150 से वापस ठंडा कर रहे हो उसको। Okay. तो दैट इज इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, that will come on that range. That Okay. value is also denoted by J by G because enthalpy का तो value J by G में ही denote करोगे ना, जूल Okay. पर ग्राम। Okay. Okay. Now it's fine. Yeah, understood, sir. Yeah, So it only one point out. When we continuously do this, how many times material can be processed? Like first time a compounding person, polymer person is doing that polymerization. After that, compounding is done. Like in metals, if we do 3-4 times, the property actually deteriorate. it will get iterated. So we can see in this material that it is processed for Yeah. 3 times. Okay. So if it is a hydrocarbon resin, Okay.
Yeah, hydrocarbon polymer like polyethylene, polypropylene, depending upon the grades. Like if it is a perfectly homopolymer grade, so you can do 3 times recycling, right? There is no issue. If it is a copolymer grade, because rubber has a tendency to somewhat degradation, right? उसका थोड़ा बहुत टर्शियरी कार्बन निकल के वो डिग्रेड होना चालू होता है, तो उसका भी डिपेंड्स वेदर यू हैव टू प्रोसेस इट इन लोअर रेंज। अगर 190 में नॉर्मल आपका एक नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं वर्जिन पीपी प्रोसेस कर रहे हो, तो रिसाइकल्ड को आपको थोड़ा सा कम टेम्परेचर में प्रोसेस करना पड़ेगा, because to avoid, but it also polymer को मेरे जितना पता है polypropylene that I have seen by melting doing multiple cycle in extrusion, same material को वापस grind करके वापस डालते हैं, so it does not loses its property homopolymer और polypropylene up to 2 to 3 cycle, 3-4 cycle के बाद deteriorate होना चालू हो जाता है, एमएफआई को थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। Okay. बट इन पॉलीस्टर्स, नायलॉन, ये सब ग्रेड जो है आपका पॉलीएमाइड, नायलॉन, आपका पॉलीएमाइड हो गया, पॉलीइथिलीन टाइप का, ये लोग हीट सेंसिटिव है, तो ये 1-2 साइकिल के बाद इसका प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट होना चालू हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट। ये ऑल्सो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल भी है, जो एस्टर्स एमाइड जो कल भी बताया था ना, हाइग्रोस्कोपिक रहते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मॉइस्चर पकड़ता है तो ज्यादा डिग्रेडेशन का भी चांसेस रहता है। What you mentioned, तो पता चल hygroscopic or hydro? हाइग्रोस्कोपिक, Okay, can you repeat that? HYGRO, हाइग्रो। It's okay, but what is the background? Sorry, I was not missed out yesterday class. So I've told you that the some of the bond like C double bond O H NH bond in amide and C double bond O single bond O bond in esters. So these bond, what they do, their tendency is this bond has a tendency to bind the water molecules by intermolecular forces. तो वो वाटर को जो है ना ऑब्जर्व करके रख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, समवट केमिस्ट्री का पार्ट है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्रिएट, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है। आप पॉलीप्रोपिलीन पॉलीइथिलीन को आपको इतना ड्राई नहीं करना पड़ता है, जो मोस्टली जो कमर्शियल कम्युनिटी पॉलीइथिलीन पॉलीप्रोपिलीन का पॉकेट पॉकेट देखते हो ना प्लास्टिक्स, उसको कोई ड्राई नहीं करता, वो सीधा आपको बोरी निकाल के बोरी का पूरा उसको फिल कर देते हैं। लेकिन आप कोई भी पॉलीइथिलीन टेरिप्थालाइट नायलॉन ये सब देखे हुए, तो उसको प्रॉपर्ली आपको डिह्यूमिडिफायर में पहले ड्राई करना पड़ता है, साइलो जैसा डिह्यूमिडिफायर, फिर उसको प्रोसेस करना रहता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करना रहता है। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा हो गया तो फिर आपको पॉलीमर को वो हाइड्रो आपको पॉलीमर को वो डिग्रेड करना चालू करता है पॉलीमर चेन Okay, व्हाइल what प्रोसेसिंग about? Okay, nylon is a hygroscopic that मटेरियल, जो थर्मली जब प्रोसेस करते हो ना, एट द एंड थर्मल प्रोसेस करने टाइम वो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत डिटोरेट करना चालू करते हैं, पॉलीमर चेन that's ब्रेक what हो जाता है उसका। we have to while pre-processing we have to take care, right? It should not Yeah, contain moisture it's content. very much you have to take care for nylon. Without any certain care you can't process nylon. Okay, what about let's suppose we have made the component through nylon, and if we put in a water, then what will happen? Yeah, that will know that the property will deteriorate with respect to time, but it will not what you can say it will not like it will not get a you will not get a property like in अगर 5-6 महीने का सेल्फ लाइफ है तो चल जाएगा। अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल डिटोरेट, क्योंकि नायलॉन का पानी मॉइस्चर ऑब्जर्व करके उसका उसका अंदर Degradation. प्लास्टिसाइजेशन इफेक्ट क्रिएट होता है नायलॉन के अंदर। It will start और नायलॉन degradation, right? नो डिग्रेडेशन ऑल्सो होगा, लेकिन जब तुम थर्मल एनर्जी दोगे उसके साथ साथ हीट प्रोवाइड करोगे, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो अगर आप आउटडोर एप्लीकेशन में है तो ऑब्वियसली सन रे से हीट आ रहा है, यूवी रेज आते हैं, आईआर रेज आते हैं, राइट? Okay. तो वो सब रेज से भी बहुत डिफेक्ट होता है प्रॉब्लम। मैं व्हाट आई एम गिविंग द एग्जांपल इज व्हाइल यू आई वी आर प्रोसेसिंग द पॉलीमर, जब हम प्रोसेस करते हैं तो ऑब्वियसली 250 260 में प्रोसेस करते हैं ना उसको, Right. उस टाइम तो वो हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, उसके साथ पानी रहा तो वो क्या होता है ड्रूल होना चालू हो जाता है, डिग्रेड होना चालू हो जाता है। बट अदरवाइज ऑल्सो नॉर्मल अगर आप एप्लीकेशन में नायलॉन ले रहे हो, बिकॉज सम ऑफ द एप्लीकेशन इफ यू अंडरस्टूड इज वेरी मच ओवर स्पेसिफाइड। अगर आपको 50 एमपीए 10-20 सॉरी नायलॉन के केस में 40-50 एमपीए स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा, सॉरी तो लोग क्या बोलते हैं कि 70-80 एमपीए तक देके रखते हैं स्ट्रेंथ, जो कि
जनरली अचीव हो जाता है, बट अगर आप वाटर नाइलॉन एब्जॉर्ब भी कर लिया तो उसका स्ट्रेंथ घट के 10 एमपीए से घटेगा, लाइक 60-70 रहा तो 60 एमपीए तक आएगा। बट यू आर ऑलरेडी मैचिंग द डेडलाइन गाइडलाइंस ऑफ 40 एमपीए, तो आपको उतना फर्क नहीं Okay, पड़ता। that is a safety of factor while considering while designing. Yes, yeah. Yeah, considering DVP requirement. That is the over specified design. That I know that design stress value, strain value. Mm, That okay. what we have taught in our But lessons. your point is that if we made the part physically, and let's suppose that application is means in the application usage is like that water interaction will be there, physical water interaction. Yeah, Then but there are some part which is made of nylon also, glass filled nylon. That is water interaction. What to do with मतलब any उसका example? जब तक उसके ऊपर ऐसा कुछ सच थर्मल स्ट्रेसेस ज्यादा नहीं आएंगे पानी के साथ साथ, तो उसको इतना प्रॉपर डिटोरेट नहीं होगा। इट मे बी डिटोरेटेड 1000 years टू डिटोरेट प्रॉपर्ली। अगर ईयर लेके तो टूटेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी है उसके साथ, तो इसका लाइफ टाइम ऑफ दैट प्रोडक्ट में रिड्यूस, बिकॉज नाइलॉन हैज अ टेंडेंसी टू कैच वाटर विथ आल्सो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस भी है, और ये भी That you talk about in terms of that strength point of view, right? yes, strength point of view also. Why you are designing the product? Because of strength you are What designing about it, right? in terms of that shrinkage or expansion while in contact with water for nylon? No, it will not shrink. No, that does not, that much it does not affect the material. Okay, got it. Mm, Okay, so that's it for today session, I guess. yeah. We have already. So from also I will tell you the other things about like next So tomorrow, week. Tomorrow I think one of my colleague will be there, so he'll be taking your classes. okay. Because I have other works also, so I need to also kept like. Sir, can we get your number or mail ID so that we can interact? Because Oh yeah, I'll provide you. sorry, sir. I'll provide you all. Don't worry, I'll provide. Yeah, yes. Dr. Nayak. So okay, good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you.